वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? हेमंत, कल्पेश, आशुतोष, होप एवरीवन इज गुड. So today we need to complete our that chapter which we have started in the last class. That was offense and penalty. Regarding the offense and penalty, theoretical question or maybe some practical with example can come. So this chapter is otherwise very important. So you may expect some question from the offense and penalty chapter in the exams. So today we will start with the section 132 and same. If you like to discuss any other point, because again today probably we would be able to complete in time. If you like to discuss any other point, kindly confirm so that accordingly I will make the plan for the today class. अगर आपको कुछ और भी टॉपिक का या कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन करना है तो आप मुझे बता दीजिए. अकॉर्डिंगली मैं इसका जो कंप्लीशन है will ensure कि that हमारा लगभग 8:15 तक कंप्लीट हो जाए, and after that we have the time of half an hour. Let me start the punishment of certain offenses. First we will read the language of the law and then we'll start the analysis. ठीक है? Whoever commit or cause to commit या ये I'm not sure. We'll ask and then confirm. But अभी वाले में जो मुझे syllabus है मेरे पास में, the total 4 classes is there for this, in which there is no practical problem solution class. क्योंकि मुझे जो अपने चैप्टर बचे में 3-4 सिर्फ उसी का डिस्कशन करना है. There is no separate class for the practical problem. But अगर आप आशुतोष, if you go to that particular my first class of that revision, in which I have taken the first big 14 वाला जो 14 marks का जो problems आता है, that I have taken, like that was pertain to ITC chapter. So exam point of view से जो अपनी revisionary class हुई थी ना, उसमें मैंने लिया था. I'm not sure that whether you've taken or not taken. Anyway, so whoever commit or cause to commit and retain the benefit arising out of any of the following offense. You remember that this section 132 has the linking with the section 69. Section 69 मतलब power to arrest. 132 has interlinking with the section 69. Can anybody tell me कि if the amount exceeds, कितना amount अगर exceed होगा, then officer can arrest that person subject to certain offenses. कितना amount of tax involved था, and if it is exceed that amount, then person can be arrested. Answer was, requesting everyone to give the reply. कितना amount involved था? It was more than 2 crore. Correct na? It was more than 2 crore, more than 5 crore. And in this we have discussed certain component like cognizable, non-cognizable, something like we have discussed, right? Supply any goods or service. Yes, bailable, non-bailable. Thank you. Great, Revan Prasad. Whoever commit or cause to commit and retain the benefit. Please quickly tell me the similar part we have discussed somewhere else also. ये बात हमने कहीं और भी पढ़ी है. Please confirm where we have discussed and retain the benefit. This point we have already discussed somewhere else. This point we have discussed somewhere else.
लेट मी गिव यू द हिंट, मास्टरमाइंड। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं मास्टरमाइंड के लिए। कैन यू टेल मी वेयर वी हैव डिस्कस दिस प्रोविजन? अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट में अमेंडमेंट हुआ था, इस सेक्शन 83 में अमेंडमेंट हुआ था, एंड बाय एडिंग वन प्रोविजन, एंड दैट प्रोविजन वाज फॉर द मास्टरमाइंड। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूं, राइट, सेक्शन 122 1A की। The problem in the section 122 was it was applicable on the taxable person, or it was applicable on the registered person, and therefore they have inserted the new provision, any person. Absolutely correct, R Prasad, आशुतोष। उन्होंने क्या किया, एनी पर्सन हु, जिसके इंस्ट्रक्शन पे वो ऑफेंस हो रहा है एंड वो रिटेन द बेनिफिट, अभी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ही कैन बी पेनलाइज्ड इन द सेक्शन 122 1A। supply any goods or services or both without issue of an invoice in violation of the provision of this act or the rules made thereunder, and with an intention to evade the taxes. If intention is not being able to prove by the department, अगर वो intention prove नहीं होता कि malified intention था, then it cannot be penalized in the 132 1A. Issue any invoice or without supply of the goods in violation of the provision of the act, the rule made thereunder, leading wrongful availment or utilization of ITC or refund of taxes. पहला क्या था कि सप्लाई करता है गुड्स का विदाउट इनवॉइस एंड विद एन इंटेंशन टू इवेट द टैक्स। मैंने इनवॉइस दिया बिना सप्लाई के, सॉरी, मैंने गुड सप्लाई किया बिना इनवॉइस के। हियर आई हैव गिवन द गुड्स बट नो इनवॉइस। ठीक है, यहां पे क्या किया, यहां पे सिर्फ इनवॉइस दिया विदाउट गुड्स और सर्विस, विदाउट सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज, लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ऑब्वियसली जब मैं सिर्फ इनवॉइस दूंगा तो सामने वाला पार्टी क्या करेगा, ऑब्वियसली या तो आईटीसी लेगा या क्या करेगा, he will take the refund. Quickly give me the answer. I know that my question is different, relating to different chapter, but I expect the reply from anyone and everyone. अब मैं रिफंड सिचुएशन में मैं आईटीसी का रिफंड ले सकता हूं, in which category I am entitled to take the refund of input tax credit, in which cases I am allowed to take the refund of accumulated ITC. ये मेरा क्वेश्चन है। किस केस में मैं आईटीसी का रिफंड ले सकता हूं? आशुतोष and R Prasad. Yes, one situation I have received your answer. There are only two situations. Zero rated supplies under LUT. Absolutely correct. What about second situation? What about second situation? Great. Very nice, Madhvendra. Second situation where I'm allowed to take the refund of input tax credit. First situation, you all have given the correct reply. You all have given the correct reply. So, नहीं, ITC की बात कर रहा हूं। R Prasad, you are saying payment of tax in export, then that is refund of taxes paid. So for that, rule 96 says that whatever the taxes I am paying, I am entitled to take the refund. But ITC case में on payment of tax वाला component include नहीं है. It is under LUT. What about second? Madhvendra has given the right answer. Expecting all the participant, please give the reply. Absolutely correct, Madhvendra. That is IDS. What is IDS? What is IDS? Today we are going to discuss the ethical chapter also, and in which we might go to the some other chapter, other provision as well. Let me repeat once again. Inverted क्या है? दूसरा केस है मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। दूसरा केस क्या है मेरा? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। वेल अप्रिशिएटेड।
थैंक यू। तीसरा केस क्या है, राइट, मोटोरोला S40। एक मैं आपका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज चेंज योर नेम। तो अपन बात मतलब देन वी कैन टॉक अबाउट बाय यूजिंग योर नेम, वी वुड बी एबल टू कन्वर्ट, वी वुड बी एबल टू डू द कन्वर्सेशन इन योर नेम ओनली, ठीक है। तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है अवेल द आईटीसी यूजिंग द इनवॉइस or bill referred to in clause B or fraudulently avail the ITC without any invoice or bill, ठीक है। Next is collect any amount as tax but fail to pay the same to the government beyond a period of 3 months। मतलब कोई टैक्स कलेक्ट किया और उसको पे नहीं किया गवर्नमेंट को फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट। नाउ इज देयर एनी डिफरेंस, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ यू एबल टू कनेक्ट टू दैट पॉइंट इट वुड बी अप्रिशिएटेड। इज देयर एनी डिफरेंस इन द फर्स्ट 4 ऑफेंस एंड रेस्ट ऑफ द 4 ऑफेंस? क्या इसका किसी के साथ लिंकिंग है क्या? इज देयर एनी लिंकिंग विद एनी प्रोविजन? फर्स्ट 4 ऑफेंस आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 4 ऑफेंस 132(1) का ए, बी, सी और डी, इसका किसी के साथ लिंकिंग है क्या? Does it have any interlinking with any provision? Recall and tell me that क्या इसका किसी के साथ इंटरलिंकिंग है? नॉट सेक्शन 73, नहीं बेटा, सेक्शन 73 के साथ तो नहीं है। एनी गेस? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं, दे आर ऑल इनवॉइस रिलेटेड फ्रॉड, दैट इज ओके, बट इंटरलिंकिंग, आंसर इज यस, सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट। 69 का एप्लीकेबिलिटी कब आएगा? अगर ये 132(1) के 4 ऑफेंस प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 2 करोड़, ये कहां पे लिखा हुआ है? अभी हम जब 132 का बॉटम पार्ट रीड करेंगे ना, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, क्वांटिफिकेशन की जब बात करेंगे तो 132(1) के ये 4 ऑफेंस प्लस क्वांटिफिकेशन ग्रेटर देन 2 करोड़, देन सेक्शन 69 वुड बी अट्रैक्टेड। फाइन। मैंने क्लास स्टार्ट होने के टाइम पे डिस्कशन किया था, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं बिकॉज सम न्यू पार्टिसिपेंट हैज जॉइंड। If you like to ask any question, we will try to spend the time 20-30 minutes. We will try to spend the time 20-30 minutes. अगर आपको कोई भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन पूछना है, if you like to ask any point, then please let me know right now only. तो क्या होगा, मैं अकॉर्डिंगली अपनी आज की क्लास को मैनेज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। Now that clause E says that evade the taxes or fraudulently obtain the refund, and where such offense is not covered in the clause A to clause D. तो ऊपर वाले ऑफेंस को छोड़कर अगर और कोई ऑफेंस है जहां पर वो टैक्स का इवेजन करता है या रिफंड ऑब्टेन करता है फ्रॉडुलेंटली, falsify or substitute the financial record or produce fake account or document or furnish any false information with an intention to evade the payment of tax under this act. Acquire the possession or in any way concern himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing, or in any other manner deal with any goods. कौन से गुड्स में वो डील करता है? Which he know or has reason to believe that are liable to be confiscated. उसे मालूम है जिस गुड्स में वो डील कर रहा है, किस तरीके से डील कर रहा है, either in the transportation, removing, depositing, keeping, किसी भी तरीके से वो गुड्स में डील कर रहा है। कौन से गुड्स? जो जानता है कि वो और रीजन टू बिलीव है कि वो गुड्स आर लाइबल टू बी कॉन्फिस्केटेड।
receive or in any way concern with the supply or any other manner deal with any supply or the service। ऊपर हमने यहाँ पर गुड्स की बात की, अब यहाँ पे हम सर्विस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉन्फिस्केशन की बात की, यहाँ पे हम कॉन्ट्रावेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट और abet the commissioning of the offense। Which offense? Clause A to clause F and clause H and clause I of this section। तो attempt to commit और abet the commissioning, ठीक है, shall be punishable। अब यहाँ पे 3 क्वांटिफिकेशन है और 3 क्वांटिफिकेशन में सेक्शन 69 कब एप्लीकेबल होगा? क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में वो ऑफेंस क्वांटिफाई होता है। मतलब हमने शॉर्ट में समझने के लिए 2 करोड़ कहा, तो 2 करोड़ का, क्योंकि ये बात करता है मोर देन 2 करोड़ की बट अप टू 5 करोड़ की, और ये क्या कहता है? मोर देन 5 करोड़ की। तो मैंने क्या कहा? सेक्शन 69 कब अट्रैक्ट होगा? अगर सेक्शन 132(1) का ऑफेंस आपका किस में है? क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी है, प्लस या तो क्वांटिफिकेशन 1 में है या 2 में है। तो इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूं? अगर ऑफेंस का अमाउंट मोर देन 2 करोड़ है तो देन ही विल बी लाइबल और द पावर ऑफ अरेस्ट प्रोविजन विल गेट अट्रैक्टेड। एक बार पढ़ लेते हैं। इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेडेड और आईटीसी wrongly availed or utilized or refund wrongly taken exceed 5 crore with imprisonment for a term which may extend to 5 years and fine। Quickly tell me, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं अरेस्ट। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट? क्या दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट? ओके, ओके, इट इज बिफोर ट्रायल मींस केस कंक्लूड नहीं हुआ है, इट इज नॉट फाइनली जस्ट डिसाइडेड, एंड देन ऑल्सो द सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी अरेस्टेड। और इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? ओनली आफ्टर कंक्लूडिंग, आफ्टर ट्रायल होता है। मतलब केस सब कुछ डिसाइड हो गया, देन इट विल बी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। तो मान लो अगर आपका लेट्स से कि इट इज फॉल अंडर क्लॉज ई, क्लॉज एफ, क्लॉज जी लेट्स से, तो क्या होगा? अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस का अरेस्ट, उस केस में उस पर्सन का अरेस्ट नहीं हो सकता। इट विल बी इम्प्रिजनमेंट। इट मींस वंस इट इज कंक्लूडेड देन ओनली दैट पर्सन कैन बी इम्प्रिजन। और अरेस्ट क्या होता है? बिफोर कंक्लूजन ऑल्सो दैट पर्सन कैन बी पुट बिहाइंड द बार। और इन केस वेयर द अमाउंट, क्लॉज 2 में क्या डिफरेंस है? क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट ओनली वेयर द अमाउंट क्वांटिफिकेशन इज मोर देन 2 करोड़। एंड अब देखिए, क्लॉज 3 पहले सभी के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन अभी क्लॉज 3 को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लॉज बी। एंड व्हाट वाज द क्लॉज बी? व्हाट वाज द क्लॉज बी? फेक इनवॉइसिंग। एक बार वापस ऊपर जाते हैं, क्लॉज बी रीड करते हैं। व्हाट वाज द क्लॉज बी? इश्यू द इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ द गुड्स। मतलब ये आपका फेक इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल है। एंड बिकॉज फेक इनवॉइसिंग was a serious matlab means offense, and there are still going on good amount of the offense, and therefore in the clause 3 उन्होंने सिर्फ इस ऑफेंस को ऐड की, इस ऑफेंस को कंटिन्यू किया। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 200 लाख 2 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा की बात कर रहा है, 1 to 2 करोड़।
In case of an offense specified in the clause B where the amount of the tax evaded or amount of the ITC wrongly availed or utilized, wrongly taken exceed 1 crore but does not exceed 2 crore, then कितना? With imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine. एक बार वापस आते हैं, लेट मी डिस्कस वंस अगेन. क्लॉज 1 में कितना imprisonment था? Imprisonment for a term which may extend to 5 year. तो यहां पे imprisonment कितना? Up to 5 year है. Up to का मतलब क्या है? Will it be always 5 year? No, depend upon the case to case. ठीक है, 5 year. और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं प्लस का साइन बिकॉज इट्स सेइंग दैट फाइन. यहां पे अमाउंट कितना होगा? अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया, फाइन कितना होगा? दैट फाइन का क्वांटिफिकेशन विल बी डिसाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट. माधव, अभी कंपाउंडेबल का तो एक प्रोविजन है ना, सेक्शन 138. देन वी विल रीच टू दैट प्रोविजन एंड विल डिस्कस इन डिटेल कंपाउंडेबल. ठीक है ना? यहां पे कितनी इंप्रिजनमेंट की बात कर रहा है? फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू अप टू 3 ईयर, अप टू 3 इयर्स एंड फाइन. यहां पे कितना था? अप टू 5 इयर्स एंड फाइन. ठीक है, और ये क्या कहता है? अप टू 1 ईयर एंड फाइन. ठीक है, और लास्ट में देखिएगा यहां पे वर्ड एंड नहीं है, यहां पे वर्ड क्या है? और. कब और? In case where he commit or abate the commissioning of an offense specified in the clause F, he shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 6 months. यहां पे पनिशमेंट की बात कितनी कर रही है? इम्प्रिजनमेंट की 6 मंथ की बात करिए, और फाइन. मतलब यहां पे दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं. विल डिसाइड, द मजिस्ट्रेट विल डिसाइड. अब हम बात करें 132(2) की, वेयर एनी person convicted of an offense under this section is again convicted, means it is a repeat offender. It is a repeat offender. मतलब एक बार गलती कर चुका लेकिन दूसरी बार गलती करने के लिए आएगा ना, देन देयर विल बी नो क्वांटिफिकेशन. मतलब वहां स्लैब वाइज रेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है. इट सेज दैट देन ही शैल बी पनिशेबल फॉर द सेकंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस. हायर वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा, भले अमाउंट यहाँ पे लेट्स से ओनली 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, डजंट मैटर. अमाउंट का बाइफर्केशन वाज इन ओनली 132(1). इट मींस ओनली फर्स्ट टाइम जब कोई ऑफेंस करता है तो. अगर वो रिपीट ऑफेंडर है, then whatever the quantum of the default is there, tax evasion is there, always he will be punishable with imprisonment up to 5 year and fine. और अगर आपको ध्यान होगा, if you can recall, 132(2) is also being linked with the section 69. ठीक है, एक बार सेक्शन 69 पर भी वापस आएंगे. ठीक है, then the imprisonment referred to in clause 1, clause 2, clause 3 and subsection 2 shall, in the absence of specific and adequate reason to the contrary recorded in the judgment of the court, it should not be less than 6 months. मतलब मिनिमम imprisonment आपको 6 मंथ देना है. तो आप 6 मंथ से कम दे सकते हैं जब तक रीजन क्या है 6 मंथ से कम देने का, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द जजमेंट. ठीक है, notwithstanding anything contained in CRPC, all offense except the offense in subsection 5 shall be non-cognizable and bailable. तो पहले हम subsection 5 समझ लेते हैं क्या है ये. Offense is specified in the clause A, clause B, clause C और the clause D. मतलब पहले वाले 4 offense and punishable under clause 1. कितना अमाउंट है? कैन एनीबॉडी टेल मी क्लॉज 1 में कितना अमाउंट है? इट इज कितना अमाउंट है क्लॉज 1 में? यस, इट इज मोर देन 5 करोड़. मोर देन 5 करोड़. तो 500 lakhs की बात कर रहा है माधव, एब्सोल्युटली करेक्ट. 500 lakhs की बात कर रहा है, तो मैं शॉर्ट में 500 करोड़ की बात कर, मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूं. ठीक है, इट्स मोर देन 5 करोड़. ध्यान रखना, ग्रेटर अप टू 5 करोड़ क्लॉज 2 में आ जाएगा.
क्लॉज 2 में क्या है, ग्रेटर देन 2 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़। क्लॉज 1 में क्या है, ग्रेटर देन 5 करोड़। तो अगर आपने वर्ड अप टू लिख दिया तो यू विल नॉट बी करेक्ट, यू विल नॉट बी गिवन द मार्क, ठीक है। ए पर्सन शेल नॉट बी, तो अभी हमने क्या कहा कि अगर आपका अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना है, क्लॉज 1 में है, मतलब ग्रेटर देन 5 करोड़ है, देन इट विल बी द कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलीवर, अदरवाइज ये नॉन कॉग्निजेबल होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, लेट्स से मिस्टर ए हु हैज कमिटेड द फर्स्ट टाइम ऑफेंस एंड द अमाउंट वाज 1 करोड़ ओनली, अमाउंट वाज 1 करोड़ ओनली, ग्रेटर देन 1 करोड़ ओनली, 1.5 करोड़ मान लीजिए। विल ही बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट? ही इज सप्लाइंग द गुड्स बट नॉट इशूइंग द इनवॉइस, क्या वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट? क्या वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट? मिस्टर ए हु इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ ₹1 करोड़, कौन सा ऑफेंस है, ऑफेंस कौन सा है, 1.5 करोड़, ऑफेंस कौन सा है, सप्लाइंग द गुड्स बट नॉट इशूइंग द इनवॉइस, नहीं करेक्ट, सप्लाइंग द गुड्स बट नॉट इशूइंग द इनवॉइस, कितना पनिशमेंट मिलेगा? सप्लाइंग द गुड्स बट नॉट इशूइंग द इनवॉइस, क्या ये क्लॉज 3 में आएगा? विल इट कम इन द क्लॉज 3? आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर किसकी बात कर रहा है, इनवॉइस इश्यू किया बट गुड्स मूव नहीं किया, बट नो गुड्स, फेक इनवॉइसिंग की बात कर रहा है, करेक्ट। और मेरा एग्जांपल क्या है, नो इनवॉइस ओनली गुड्स, it will not fall in the clause 3? Answer is yes. Then 132 1 में भी नहीं आएगा, clause 1 में भी नहीं आएगा, clause 2 में भी नहीं आएगा, clause 3 में भी नहीं आएगा। And where he commit or abate the commissioning of the clause F, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend, इसमें भी नहीं आएगा। तो आंसर इज yes, यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। Let's say second time he convict, let's say second time he convict the same amount का offense, again वो गुड्स की सप्लाई करता है बट वो इनवॉइस इश्यू नहीं करता है, विल ही बी पनिशेबल अंडर 132? एक बात क्लियर कर देता हूं, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल, he might not come in the imprisonment part, but punishment penalty can be levied on 122, whatever we have discussed already in the previous classes, penalty 122 का लगाया जा सकता है, only point he cannot be imprisoned in this case। मेरा सेकंड एग्जांपल है, वही सेम पर्सन is committing the same offense of 1.5 crore second time, will he be will he be convicted in the offense in 132? क्या वो 132 के अंदर लाइबल है? वन 132(2) क्या कहता है, where any person convicting an offense under this section is again convicting, वो सेकंड टाइम कन्विक्ट कर रहा है, ओके, क्या मेरा जो ऑफेंस है, is it not covered in 132(1)(a? Is it not covered in 132(1)(a? क्या मेरा जो ऑफेंस है, जो मैंने एग्जांपल लिया मिस्टर ए का, इज इट नॉट कवर्ड? इज इट कवर्ड? द प्रॉब्लम वाज फर्स्ट टाइम में जो अमाउंट इन्वॉल्व था, फर्स्ट टाइम में जो अमाउंट इन्वॉल्व था, दैट वाज नॉट बीइंग कवर्ड इन द क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। बट अगर वो पर्सन, सेम पर्सन सेकेंड टाइम ऑफेंस कंडक्ट कर रहा है, कमिट कर रहा है, विल इट नॉट बी कवर्ड इन द 132(2) irrespective of any amount? Will it not get covered in 132(2) irrespective of any amount? Answer is it will be covered. And इस टाइम इसको कितना इंप्रिजमेंट हो सकता है? With 5 year and fine. ठीक है, tell me one thing, इस केस में ऑफेंस विल बी द कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल? मुझे आप बताइए नाउ। अब मान लीजिए अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट सेकेंड टाइम जो कमिट कर रहा है ना, सेकेंड टाइम इज कमिटिंग मोर देन 5 करोड़, बड़ा अच्छा डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, आई एम टेलिंग यू वन बिग गुड पॉइंट। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम उसने 1.5 करोड़ का किया, देन यू टोल्ड कि 132(1)(a में कवर्ड है बट पनिशमेंट नॉट कवर्ड, फाइन।
सेकेंड टाइम जब वो कर रहा है, अमाउंट ऑफ द डिफॉल्ट इज मोर देन 5 crore. Will he covered in 132(2)? Answer is yes, because he is saying again convicted. Now tell me, will it be the cognizable offense or non-cognizable offense? Read the provision, then tell me the answer. Read the provision and then tell me the answer. Mr. A, first time he is committing 1.5 crore, but is again committing, second time is convicting more than 5 crore. तो second time वाला जो offense है more than 5 crore वाला, will it be cognizable offense or will it be non-cognizable offense? क्या होगा? आंसर दो मुझे. The point is, offense is specified in the clause A, clause B, clause C, clause D of subsection 1 and punishable under clause 1 of that subsection. जब ये second time offense करता है, when this Mr. A is committing second time offense, will it get covered in 132(1) or 132(2)? जब वो second time offense करता है, will he get covered in 132(1) or will he get covered in 132(2)? क्या वो फर्स्ट सेकंड टाइम जब वो ऑफेंस करता है, will he get covered in 132(1) कि will it get covered in 132(2)? एक बार इसको डिफरेंस को समझिएगा. I request everyone, please participate in the discussion and then tell me, when Mr. A is committing the offense second time, amount is more than 5 crore, fully agree with you. तो ये 132(1) में कवर्ड है या 132(2) में कवर्ड है? आंसर इज 132(2) में कवर्ड है. Will he punishable under 132(2) or 132(1)? 132(1) I can say basically first time offense के लिए है और 132(2) is second and repeat offender के लिए. If it is a repeat offense getting covered 132(2), आप एक बार देखिए, जो cognizable and non bailable है, जो cognizable and non bailable है, इसमें क्या 132(2) का रेफरेंस है? Is it having the reference of 132(2)? Is it having the reference of 132(2)? Answer is no. Therefore, my amount in the example is more than 5 crore. मैंने आपको जानबूझकर more than 5 crore कहा so that you get confused because of the clause 1. पर मेरा ये अभी एग्जाम्पल था, उसमें वो सेकंड था, again convicted and therefore it will be get penalized by 132(2) and 132(2) is not covered in this subsection 5. Therefore, it will be covered in 132(4) and answer would be absolutely correct. Kalpesh, Hemant and everyone. Non-cognizable and bailable. Same, R. Prashad. I hope it is clear ना? नहीं 122 पेनल्टी की बात करता है और 132 बात करता है imprisonment की. See, that person can be may be leviable to the tax, interest, penalty. In addition to that, he will also be liable to the imprisonment. कब? अगर वो 132 में कवर है, 132 के 1 में या 2 में, ओवर एंड अबो. मतलब ऐसा नहीं है कि इधर 122 और 132, नहीं, ऐसा नहीं है. उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा. व्हाट इज देन एडिशनल? इट इज कॉल्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस. 132 हम लोग क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, नॉट क्रिमिनल इन दैट सेंस, बट यहां पे इंप्रिजनमेंट की बात करते हैं. इट मींस ओवर एंड अबव यहां पे कवर हो जाएगा बिकॉज अमाउंट इतना साइजेबल है. क्वेश्चन इज वेरी 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 करेक्ट आशुतोष. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, राइट? किसी को अभी भी कोई डाउट है ना, तो मुझसे आप पूछ लेना. लेट्स से सपोज मैं जब आपको एक्सप्लेन करता हूं एंड यू डू नॉट गेट क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि आप मुझसे सेकेंड टाइम पूछोगे तो मैं आपको 132 में ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है. आई विल अगेन एक्सप्लेन इन द सेम मैनर. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन विद अ बेटर वे. ठीक है? अगर कोई प्रोविजन आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कितनी बार भी पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं यहां पे कह रहा था माधव कि
क्या 122 और 132 में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट हम सेम ऑफेंस हम लोग बात कर चुके हैं 122 में, एवरीथिंग इज सेम ना। क्या 122 में कुछ अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट था कि अमाउंट इतना होगा तो ये होगा, मोर देन 5 करोड़ होगा तो ये होगा, मोर देन 1 करोड़ होगा तो ये होगा? क्या 122 में was any bifurcation of the amount? आंसर इज नो। तो मतलब अगर आपने इस एग्जांपल की बात जो मैं कर रहा हूं, किसी भी केस में अगर कोई ऑफेंस कमिट किया विच इज कवर्ड इन 122 तो वो पेनल्टी तो लगेगी। इन एडिशन टू दैट अगर अमाउंट इतना साइजेबल है तो ही कैन बी अरेस्टेड और ही कैन बी इम्प्रिजन्ड ऑल्सो एडिशनली। नाउ माधव, एक पॉइंट यहां पे कह रहा हूं, मैं आपको ऐड कर रहा हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था। अगर वो पर्सन जिसको इम्प्रिजनमेंट होने के चांस है बिकॉज इट्स कवर्ड इन द 132, तो उसके लिए कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग 122 के लिए नहीं है। कंपाउंडिंग इज, जब हम बात करते हैं ना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, तो व्हाट इज द कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग ये है कि मिस्टर ए जिसको शायद इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है, ही कुड बी सब्जेक्ट टू द imprisonment, then he can get relaxation from the imprisonment only if he will go by the compounding of offense। सेक्शन 138 में हम बात करेंगे डिटेल में। बट फायदा क्या होता है कंपाउंडिंग का? आपको उस एग्जाम्पल में, अगेन मैं हमेशा मिस्टर ए की बात कर रहा हूं, भी जो भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए हैज टू ऑलवेज पे द टैक्स, ऑलवेज पे द इंटरेस्ट, ऑलवेज पे द पेनल्टी, प्लस इंप्रिजनमेंट से रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर वो 138 में जो भी परसेंटेज लिखा है वो परसेंटेज पे कर देगा। तो 138 we will going to have the discussion, but it is over and above this tax interest penalty। ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा मिस्टर ए को, ओनली इंप्रिजनमेंट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा बाई पेइंग द सम फी। तो इन दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखना मेरे सर, ठीक है? A person shall not be prosecuted for any offense except with the prior sanction of the commissioner। ठीक है, explanation क्या कहता है? The amount, the term tax shall include the amount of the tax evaded or amount of the ITC wrongly availed or utilized or refund wrongly taken under the provision of this act, comma SGST Act, IGST or UTGST Act and cess levied under the GST compensation to the state। मतलब यहां पर जो भी टैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी टैक्स है वो टैक्स इविडेड अंडर CGST, अंडर SGST, अंडर IGST, अंडर UTGST, अंडर कंपनसेशन से सारा हम इंक्लूड बात करें। बस उसी के लिए सी इफ एनी पर्सन हु इज हाईली रेपुटेटेड बट अंदर से काम वो 132 का ही कर रहा है या 132 1 का ही कर रहा है, देन अगर उसको अरेस्ट कर लिया तो उसकी जो I can say that fictitious something, whatever you can say, that fictitious जो image है that can be saved by using the compounding of offense। Brandwish is using very nice word for that person, Mr. A। Let's read once again, let's read the provision once again, ठीक है ना? अभी जो हमने बात की लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ओ माय गॉड, तो अभी हमने बात की लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ विल हैव सम डिटेलिंग। Prosecution is the institution or commencement of legal proceeding, is the process of exhibiting the formal charges against the offender। 198 of the CRPC define the prosecution as the institution and carrying on the legal proceeding against a person। Mens rea or culpable mental state is necessary for prosecution under GST law। कौन कौन से वो केस थे जहां पे prosecution can be initiated and punishment thereof under section 132, 1, 2, 3 and 6। मेजरली हमने इन अदर टर्म में हम पढ़ रहे हैं, सप्लाई किया बिना इनवॉइस के, इनवॉइस इश्यू किया बट सप्लाई नहीं की, ITC लिया, टैक्स कलेक्टेड बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, टैक्स इवेजन या फ्रॉडुलेंटली रिफंड,
false information record, dealing in the goods liable to be confiscated, dealing in services in contravention of GST law, attempt to commit or abet the commissioning mentioned above. अगर आप देखेंगे ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है पूछिए, अदरवाइज आई विल टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट रिलेटेड टू दिस बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा. जस्ट 1 सेकेंड है, मैं एक बार मैं आपको अभी जो वेबसाइट एक ओपन कर रहा हूं, मैं अपना जो जीएसटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स उनका स्टफ सीबीआईसी, ठीक है. मैं ओरिजिनली 132 जब आया था लॉ में, देन इट वाज हैविंग मल्टीपल मोर क्लॉजेस. इट वाज हैविंग द क्लॉज जी, क्लॉज जे एंड क्लॉज के. ये पहले हुआ करते थे, बट अगर आप अभी देख रहे हैं, लेट्स से डी, जे एंड के, लेट मी गो बैक टू द आवर इंस्टीट्यूट का मटेरियल. अगर आप देखेंगे ई एफ, आर यू एबल टू फाइंड द जी? एफ के बाद जी होना चाहिए, राइट? डायरेक्टली एच. आई, देन वेयर इज जे एंड के? डायरेक्टली एल. 3 clauses are missing. Why it is missing? Because it was there in the law initially, but later on it has been omitted. तो आप जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं उसमें 3 गैप है, ऐसा मत समझना कोई मिसप्रिंटिंग है, ठीक है. इट वॉज देयर इन द लॉ बट इट हैज बीन रिमूव्ड. अब इसको रिमूव करने का लॉजिक क्या हुआ? तो कोई डिस्कशन हुआ होगा जीएसटी काउंसिल में या कुछ भी, देन देयर वाज ए डिक्रीज इन द क्रिमिनलाइजेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि ये सो डिलीट हुए है ना. इट वॉज ऑल्सो बीइंग कवर्ड इन एनी अदर लॉ, लाइक सीआरपीसी की बात कर लो, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर लो, तो बोला ये ऑफेंस जो है यहां जरूरत नहीं है, यहां हटा दीजिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड समवेयर एल्स. देयरफॉर जो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 है, वहां पे 3 क्लॉज का ओमिशन हुआ, ठीक है. वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कई बार रीडिंग करते करते ये ध्यान आता ना, यार यहाँ पे 3 क्लॉज छूट गए, तो वी माइट ब्लेम और पुट सम ब्लेम कि दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिसप्रिंटिंग. नो, ठीक है. तो अभी जो ये कह रहा है इतने सारे ऑफेंस है, देन एनीवन हु कमिट और कॉज टू कमिट and retain the benefit arising out of any of the above offense can be prosecuted as under tax evaded or ITC wrongly availed or utilized or refund wrongly taken. Amount involved कितना है? Greater than 5 crore. Then punishment कितना है? With imprisonment up to 5 years and fine. और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, but it is up to 5 crore. Greater than 2 crore, but it is up to 5 crore. Then with imprisonment up to 3 year and fine. एरो को ध्यान से समझना. अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन और अप टू 5 करोड़, ठीक है. कितना इंप्रिजनमेंट है? 3 year एंड फाइन. इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई इन वायलेशन ऑफ द लॉ विच इज लीड टू द रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 2 करोड़ है, देन इंप्रिजनमेंट कितना? अप टू 1 year एंड फाइन. देन यहाँ पे बोला कि imprisonment shall be minimum period of 6 months in the absence of special and adequate reason to the contrary to be recorded in the judgment. ठीक है. Falsification of information or records with an intention to evade the tax or abetting the commissioning of said offense. कितना? ये क्लॉज एफ की बात हो रही है, राइट? जहां पे वो imprisonment up to 6 months और फाइन है. सेकेंड एंड रिपीट ऑफेंडर के लिए क्या है? नो लिमिट, ऑलवेज हायर अमाउंट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एंड शेल बी, और वो 6 month वाली बात सेम है, ठीक है. नहीं, कंपाउंडिंग की बात नहीं हो रही है हियर, देयर इज नो कंपाउंडिंग. वंस वी विल रीड, नहीं कंपाउंडिंग की बात नहीं हो रही. एक नॉर्मल प्रोविजन का कि आप किसी भी केस में 6 month से नीचे की सजा नहीं देंगे, क्योंकि मेंस रिया है तो गिल्टी माइंड तो है, इंटेंशन खराब है, बट फिर भी 6 month की सजा नहीं दे रहे, तो जस्ट गिव द रीजन. इट इज नॉट कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग में तो सजा होगी नहीं.
कंपाउंडिंग में तो सजा ही नहीं होगी. Generally, arrest can be made under GST law only when the amount involved exceed 2 crore or where a person commit any offense second time and subsequently thereafter. Correct? However, whoever issue or goes to issue and retain the benefit arising out of the issuance of an invoice or bill without supplying the goods and services in violation of the provision of the GST law, leading the wrongful availment or utilization of ITC, refund of tax, and such amount of tax, ITC, or refund exceed 1 crore but does not exceed 2 crore, he shall be punishable for a term which may extend to 1 year and fine. Any person shall not be, that we have discussed. ठीक है. अब हम बात करें कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल की. वी ऑल नो. जस्ट एक बार आप मुझे बताइए कॉग्निजेबल कौन सा होगा, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा होगा. जस्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज द रिवीजन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 132 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5. कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा. Which would be the cognizable and which would not be the cognizable. नहीं, दैट इज ओके, बट कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा. मतलब इफ यू कैन लिंक विद द सेक्शन 132 ना, दैट वुड बी माय इंटेंशन टू आस्क दिस क्वेश्चन कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल और कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है. दैट इज माय मेन पॉइंट व्हिच आई लाइक टू आस्क. करेक्ट. 132(1) विद ए बी सी एंड डी, जो फर्स्ट 4 ऑफेंस है ये क्या है, प्लस विच इज ग्रेटर देन 5 करोड़, देन ये अमाउंट, ये सिर्फ इतना ही पार्ट कौन सा है वो कॉग्निजेबल है, बाकी सभी नॉन कॉग्निजेबल है. बाकी सभी नॉन कॉग्निजेबल है. इवन 132(2) मतलब रिपीट ऑफेंडर, लेट से अमाउंट इज मोर देन 5 करोड़, तब ये क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिस्टर ए हु इज कमिटिंग द ऑफेंस, लेट्स से मिस्टर ए हु इज कमिटिंग द ऑफेंस फर्स्ट टाइम एंड इनवॉइस इशू कर दिया या गुड्स इशू कर दिया, गुड्स सप्लाई कर दिया विदाउट द कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस, और ग्रेटर देन 5 करोड़ है, ये कॉग्निजेबल होगा. आंसर इज यस, ये कॉग्निजेबल होगा क्योंकि क्लॉज ए का ऑफेंस है, ही विल बी, इट विल बी द कॉग्निजेबल. बट एज्यूम करो सेम पर्सन सेम ऑफेंस सेकंड टाइम करता है, मींस अगेन वही ऑफेंस कमिट करता है एंड अमाउंट भी वही है, क्या ये कॉग्निजेबल होगा. इस टाइम ये नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा. See and try to understand. Mr. A is committing same thing, everything is same. फर्स्ट टाइम वो ऑफेंस कॉग्निजेबल था और सेकंड टाइम वही ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल बन गया. दैट इज नॉट डाइजेस्टेबल, बट यस दिस इज द प्रोविजन. क्लियर है ना ये एग्जांपल. ठीक है. तो आपका कॉग्निजेबिलिटी और नॉन कॉग्निजेबिलिटी डिपेंड अपॉन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस रिलेटिवली लेस सीरियस इन द नेचर and in respect of which a police officer does not have the authority to make the arrest without the warrant. तो नॉन कॉग्निजेबल क्या है, विदाउट वारंट आप अरेस्ट, मतलब पुलिस दैट जीएसटी ऑफिसर कैन नॉट बी अरेस्ट एंड एन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी initiated without the court order except as may be authorized under special legislation. Let's see the offense under GST law. एक बार कॉग्निजेबल का शायद डिस्कशन छूट गया. लेट्स रीड द कॉग्निजेबल मींस सीरियस कैटेगरी in respect of which police officer has the authority to make an arrest without warrant. ठीक है. To start an investigation with or without permission of the court. So that is the difference between cognizable and non cognizable. हम डिस्कस कर चुके हैं कॉग्निजेबल कब, अगर ऑफेंस क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी के अंदर फॉल करता है एंड पनिशमेंट इज मोर देन 5 करोड़ वाली, तो ये कॉग्निजेबल एंड नॉन पेलेबल है. रेस्ट ऑल द ऑफेंस will be the non cognizable and payable. Just to reiterate, the offense is specified in the clause A, clause B, clause C, clause D. मैं skip करता हूँ because we have already discussed. Meaning of the tax, it means tax include the
amount of the tax evaded or ITC wrongly availed or utilized or refund under CGST, SGST, IGST, UTGST and cess. Okay. Let's move to the section 133. Liability of the officer and certain other person, where any person engaged in collection with the collection of statistics under section 151 or compilation or computerization thereof, or if any CGST officer having the access to the information specified in 150 subsection 1, जहां पे वो कोई स्टेटिक्स कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन से या किसी बोर्ड अथॉरिटी आरबीआई एटसेट्रा, दे आर कलेक्टिंग, दे आर हैविंग द राइट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स. बट अगर वो ऐसा पर्सन है जिसके पास में स्टेटिस्टिक्स है या मान लो कोई डेटा है, if any person engage in connection with the provision of the service on the common portal. What is the common portal? What is the common portal? Goods and Service Tax Network, GSTN. ठीक है. और the agent of the common portal, कौन है agent common portal के? Like all the person जिनके पास में वो they are service provider, GSP जिनको हम कहते हैं, Big Four हो गया, EY हो गया, Clear Tax हो गया. These all the companies who are the goods and service tax network की सुविधा provider हैं, they are the GSP or ASP. Will fully disclose any information or the content of any return furnished under this act otherwise than in execution of his duty for the purpose of or for the purpose of prosecution of an offense or under any other act for the timing in force. तो जो मेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए इंफॉर्मेशन करता हूं, शेयर करता हूं, नो प्रॉब्लम. अदरवाइज अगर मैं करता हूं तो पनिशमेंट मिलेगा with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 25,000. A person shall be prosecuted for any offense under this section अगर वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है then with the prior sanction of the government, और अगर other than government servant है with the prior sanction of the commissioner only. ठीक है. 132 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात कर रहे हैं. सिंपल है. क्या कह रहा है ये? नो कोर्ट शैल बी cognizance of any offense punishable under this act except with the prior sanction of the commissioner, and no court inferior to that of the magistrate of the first class shall try such offense. तो एक ऑफेंस के cognizance की बात की गई है, then they will take the prior sanction of the commissioner. Presumption of the, हाँ ये बड़ा problematic point है. Section 135 is being multiple time used in the notices, order, etc. Try to understand what is this. If section 130, presumption of culpable mental state in any prosecution for an offense which require the culpable mental state on the part of the accused, court shall presume the existence of such mental state. As per the explanation to the section 135, the culpable mental state include the intention, motive, knowledge and belief for reason to be believed a fact. कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब कोर्ट जब भी स्टार्ट करेगा ऑफेंस, ठीक है, जिसमें कल्पेबल मेंटल स्टेट होना जरूरी है, तो वो मान लेगा कि इसमें है कल्पेबल मेंटल स्टेट. हाउएवर द डिफेंस फॉर द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट, कल्पेबल माइंड नहीं था उसका, ये उसे प्रूव करना पड़ेगा. With respect to act charged as an offense in that prosecution, explanation 2 says that is to be proved only when the court believe to exist beyond reasonable doubt and not merely its existence is established by a preponderance of the probability. एक बार मैं वापस इसमें जाता हूँ, सीबीएसई की वेबसाइट में जाता हूँ and we would be able to understand, read 135 clearly. तो अभी आपको
कभी भी whenever you require some reference of the law, कभी भी अगर आपको बेयर एक्ट सेक्शन पढ़ना है फॉर प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो, फॉर एनी पार्ट ऑल्सो, it is advisable to go to that government website cbic.gov.in. It is always advisable. You will find everything with respect to notification, section, rules, etc. You will find everything here. Circular, order. तो मैं यहाँ पर एक बार 135 रीड करता हूँ, ठीक है? What is the 135? In any prosecution for an offense under this act which require a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence, but it shall be the defense for the accused to prove that he had no such mental state. Clause 1 says, explanation 1 says, expression culpable mental state include the intention, motive, knowledge, or belief. And a fact is said to be proved only when the court believe it to exist beyond reasonable doubt, or not merely when the existence is established by a preponderance of the probability. तो यहाँ पे तो fact is said to be proved, मतलब a fact is said to be proved कब? जब रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये कंफर्म हो जाता है, कोर्ट को लगता है नहीं ये नहीं था. इन दैट केस, सो इफ यू रेफर सर्टेन जजमेंट एटसेट्रा, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेक्शन 136 रीड करते हैं. व्हाट इज द 136? रिलीवेंस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ए स्टेटमेंट मेड एंड साइंड बाय ए पर्सन और appearance in response to any summon issued under section 70. Quickly tell me, what is the penalty if someone is not presenting or not complying the provision of summon? किसी को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या किसी को खुद इन पर्सन प्रोड्यूस होना है and is not complying that summon, what is the penalty? We have already discussed in 122. हमने 122 में बात की थी. Tell me, what is the quantum of penalty? ये theoretical chapter is very tough to remember. Otherwise कैसा लगता है, ये सारे एक जैसे लगते हैं. But it's better whenever you are reading, try to correlate with other provision. जब interlinking करेंगे तो possibility है कि it will be मतलब कि आपको याद हो जाएंगे ये सारे provision. Some participants are saying 10,000, some participants are saying 25,000. आप बताओ, मुझे नहीं मालूम. You tell me. 3-4 answer I have received. Let me see the other reply as well, and then I will tell you. ये ऑप्शंस हमने कहां पढ़ा था? ये पॉइंट हमने कहां पढ़ा था? फेल टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर व्हेन इश्यूड विद ए समन फॉर अपीयरेंस टू गिव एविडेंस या प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इन एन इंक्वायरी. कितना कहां पे ये कवर्ड है? ये 122 के सबसेक्शन 3 में कवर है. और वहां पे क्वांटिफिकेशन कितना है? वहां पे क्वांटिफिकेशन अमाउंट कितना है? shall be liable to the penalty which may extend to 25,000. मतलब 25,000 CGST and similar amount of SGST. So total penalty कितनी लग सकते हैं? Up to 50,000. Just confirm one thing. Just confirm one thing. If some penalty is liable up to, तो क्या point दिमाग में आता है? What is the additional point you can argue for that penalty? अगर कोई पेनल्टी का क्वांटिफिकेशन अप टू है तो आप मुझे क्या बता सकते हो एडिशनल पॉइंट? इफ एनी पेनल्टी इज हैविंग द क्वांटिफिकेशन इज अप टू, देन व्हाट कुड यू टेल मी वन एडिशनल पॉइंट? वेरी नाइस यार, वेरी नाइस. देन आई कैन से section 126 will come into the picture. Section 126 will come into the picture. और 126 आएगा तो क्या होगा? No penalty, no penalty for, no penalty for. सेक्शन 126 क्या कहता है? आपको पेनल्टी नहीं लगानी है. कब? दो सिचुएशन में. इफ इट इज ए माइनर ब्रीच और प्रोसीजरल लैप्स.
if it is a minor breach or procedural lapse. When you say if it is a minor breach, आप minor breach कब बोलेंगे? किसी भी जो आपकी नॉन कंप्लायंस है, when it will be called as a minor breach, कब कहेंगे आप वो minor breach है? When it will be called as a minor breach, if it is टैक्स का जो कंपोनेंट है वो लेस देन 5,000 है, कि 5,000 रुपए तक है, तो मैं उस अमाउंट में या कैन यू टेल मी? एब्सोल्युटली करेक्ट हेमंत, आर प्रसाद, ज्ञानेंद्र। एक पॉइंट और था, या तो 5,000 तक का टैक्स का नुकसान है, या दूसरा एक पॉइंट और था माइनर बीच में, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो। इजीली रेक्टिफिएबल, कोई मिस्टेक ऐसी है जो कि इजीली रेक्टिफिएबल है, in that case that will also, right Madhav, that will also be called as a minor breach. तो एक बार 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, let's take a break of 10 minutes and then we will start with the section 136. Still one more point, if you like to discuss any other provision, तो मैं accordingly इस चैप्टर के डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा, एंड लास्ट हाफ एन आवर में मैं ट्राई करूंगा कोई अदर प्रोविजन आपको डिस्कस करना है या कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है, यू कैन डिस्कस, यू कैन टेल मी एनी पॉइंट विच यू लाइक टू डिस्कस विच बिलोंग्स टू अदर चैप्टर ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वी विल रिज्यूम एट 7:11। अशोक जी, 10 मिनट का ब्रेक स्टार्ट।
136, ठीक है। क्या कहता है 136? स्टेटमेंट मेड एंड साइंड बाय अ पर्सन ऑन अपीयरेंस इन response to any summon issued under section 70 during the course of any inquiry or proceeding shall be relevant for the purpose of proving the truth. When the person who made the statement is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adversing party whose presence cannot be obtained without an amount of the delay or expenses, the court consider unreasonable. And when the person who made the statement is examined as witness in the case before the court, and the court is of the opinion that having regard to the circumstances, the statement should be admitted in evidence in interest of the justice. So 136 is saying कि कोई भी स्टेटमेंट का रिलेवेंस कब है. लेट मी रिपीट वंस अगेन. एक स्टेटमेंट जो साइन किया किसी पर्सन ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग shall be relevant for the purpose of proving the truth in any prosecution for an offense under this act. अगर वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिया वो एक्सपायर हो गया या कैन नॉट बी फाउंड या इनकेपेबल ऑफ गिविंग द एविडेंस है, उस केस में क्या है, कोर्ट कंसिडर अनरीजनेबल. तो उस स्टेटमेंट की रिलेवेंस क्या है, कोर्ट विल कंसिडर एज अनरीजनेबल when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court, and the court is of the opinion having regard to the circumstances, statement should be admitted in evidence. ठीक है. ऑफेंस बाय द कंपनी, ये सेक्शन हम सभी को जानना जरूरी है. करेक्ट. Someone is saying that they are working in the company who is committing the offense or something like that. Correct ना? तो केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? When the offense under this act has been committed by a person, वो person कौन है? कंपनी है. It includes the firms or other association of individuals. Every person who at the time of the offense was in charge or responsible of the company for the conduct of the business shall be deemed to be the guilty. देखो इस 137 में क्या पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे. एक जो कि deemed to be guilty है, मतलब जिसे हमेशा माना जाएगा कि जो भी ऑफेंस हो रहा है उसके लिए ये पर्सन गिल्टी है. ये कौन पर्सन है? जो कि ओवरऑल इंचार्ज है फॉर द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. लाइक लेट्स से मिस्टर ए हु इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर. मैं हेड ऑफ द फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर एचओडी मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एचओडी ट्रेजरर की बात नहीं कर रहा हूं. नहीं, बिकॉज they are responsible, HOD are responsible for only one operation of the company. But here they are saying the offense commit हुआ, they was in charge and responsible for the conduct of the business of the company. इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल एंटायर कंपनी के बिजनेस, एंटायर कंपनी के कंडक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, दे विल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी. मतलब कंपनी का हर ऑफेंस के लिए दे विल बी कंसिडर्ड एज ए गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. क्या मतलब हुआ? लेट मी गो टू द बॉटम, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो लोग हैं, इफ दे प्रूव दैट दे वर नॉट इंक्लूडेड और दे हैव टेकन सर्टेन रीजनेबल स्टेप्स, या उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऑफेंस हो रहा है, अगर वो प्रूव कर देते हैं देन ओनली दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए गिल्टी. अभी तो हमने सिर्फ किसकी बात की है? द पर्सन हु आर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन और इन चार्ज ऑफ द कंपनी. How person become non-existence? Because when he is registering, everything is given like Aadhaar, but T might be I have obtained the registration. Might be the registration is being obtained by any hook and crook. We all know that initial days how the registration was granted. Correct?
एंड दैट इज द रीजन आइए 122 1A क्यों आया, मास्टरमाइंड है, मतलब कि कई बार कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे ऑब्टेंड हो गए जो कि एक्चुअली में पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, या वो पर्सन लाइक लेबर है, इट्स। So there are various possibility, all possibility could be there. And then they found that it is non-existence. जब रजिस्ट्रेशन लिया तब उसने अपना एक फेक बोर्ड लगा दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तब लगा दिया। आधार ऑथेंटिकेशन वाज नॉट सिंस बिगिनिंग, आशुतोष, ये आधार ऑथेंटिकेशन एटसेट्रा वाज नॉट सिंस बिगिनिंग ऑफ द लॉ, राइट, ये बाद में ऐड हुए हैं, और अब तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन भी आ गया। करेक्ट, ये पॉसिबल है नोटिस का रिसिपिएंट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूं, द काउंसिल हैज टेकन 2 times द ड्राइव। उन्होंने एक ड्राइव कंडक्ट किया था जहां पर वो ऑफिसर फिजिकली जा रहे थे टू सम सस्पेक्टेड पीपल, एंड दे हैव कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन। लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ दैट सस्पेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल विजिट। तो हो सकता है जब रजिस्ट्रेशन ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्सन वाज एग्जिस्ट, बट लेटर ऑन वो खाली इनवॉइसिंग, फेक इनवॉइसिंग में इन्वॉल्व है। जब एक्चुअली विजिट करे तो मालूम चलता है ये तो कोई पर्सन था ही नहीं, है ही नहीं। दैट कुड बी द रीजन। ठीक है ना? However, an offense has been committed by the company and it is proved that offense has been committed with the consent or attributable। अगर ये दो चीज प्रूव, देखो हमने दो बात पढ़ी ना, पहला विल ऑलवेज बी डीम टू बी गिल्टी, उसे अगर डीम टू बी गिल्टी नहीं होना है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो अदर ऑफिसर है, लेट्स से डायरेक्टर, लेट्स से एम्प्लॉय, ठीक है, सेक्रेटरी, मैनेजर, लेट्स से मिस्टर एक्स इज द मैनेजर अकाउंट्स, क्या वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? आंसर इज वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। डीम टू बी गिल्टी है नहीं, वो कब रेस्पॉन्सिबल होगा? जब ये प्रूव हो जाता है, व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट जो ऑफेंस कमिट हुआ है ये मिस्टर एक्स के कंसेंट से हुआ है, और या जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो बिकॉज ऑफ मिस्टर एक्स की नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है। ठीक है, देन डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल ऑल्सो बी लाइबल टू बी द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, प्रूव होने पर। ठीक है, where an offense under this act has been committed by the taxable person being partnership firm or LLP or HUF or trust, the partner karta managing trustee shall be deemed to be the guilty and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, and the provision of the subsection 2 mutatis mutandis shall apply to the such person। तो उन्होंने कहा जो भी हम बात की हमने, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय द पार्टनरशिप ऑफ और एलएलपी और एचयूएफ और ट्रस्ट, तो पार्टनर या कर्ता या मैनेजिंग ट्रस्टी शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। जैसे हमने बात की था ना, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द कंपनी, तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा। तो अगर इन केस द पार्टनरशिप है तो पार्टनर को डीम टू बी गिल्टी माना जाएगा, कर्ता या मैनेजिंग ट्रस्टी को डीम टू बी गिल्टी माना जाएगा, एंड पनिशमेंट होगा। और बाकी जो हमने बात की वो सेम एप्लीकेबल होगी, मतलब कंपनी के केस में द ओवरऑल इंचार्ज लाइक लेट्स से मैनेजिंग डायरेक्टर, तो और इस केस में फर्म के केस में क्या होगा? पार्टनर। नाउ दे हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन इन द 137 आर सेइंग दैट डायरेक्टर फर्म के केस में कौन होगा? पार्टनर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो डीम टू बी गिल्टी है, जो डीम टू बी गिल्टी पड़ा, वो अगर प्रूव कर देता है क्या ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, उसे मालूम ही नहीं था, या हिज एक्सरसाइज ऑल द ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमिशनिंग ऑफ दैट ऑफेंस, अगर वो ऐसा प्रूव कर देता है देन इन दैट केस ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए गिल्टी। बट सर समटाइम नोटिस इज कमिंग दैट पार्टिसिपेंट इज नॉट इन, बट सर लोकेशन विल, करेक्ट, लोकेशन रहता है, लेकिन मान लो वहां पे कोई बोर्ड ही नहीं है, वहां पे वो पर्सन ही नहीं है, वो बिजनेस ही कंडक्ट नहीं हो रहा, बट आज भी टैक्स इनवॉइस उसी लोकेशन से शो रहा है। पॉसिबल है ना? XYZ लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड फॉर लोकेशन ए, बट जब वो ऑफिसर अब अगर फिजिकली विजिट कर रहा है, लेट्स से दैट रजिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन इन 17, अब वो फिजिकली विजिट कर रहा है तो मालूम चला ना तो वहां पे कोई XYZ है, ना वहां उस चीज का कोई बिजनेस हो रहा है, वहां पे तो कुछ और ही बिजनेस है।
In that case, these possibility would be there. Very important provision of this chapter. मैंने कई बार देखा है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. Sometime they are asking the question on the compounding, and recently it has made certain changes. So therefore this section is very very important for all of us. यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और अमेंडमेंट है तो इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. पहले हम लॉ पढ़ते हैं. व्हाट इज द कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मेन मतलब समझ गया ना? कंपाउंडिंग का मेन मतलब क्या और मेन बेनिफिट क्या है? नो पनिश, नो इम्प्रिजनमेंट. करेक्ट. दे हैव टू पे द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी प्लस एडिशनल जो भी परसेंटेज बोला गया, दे हैव टू मेक द एडिशनल पेमेंट. जो भी परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे अभी रूल 162 में. This is the over and above this tax interest penalty. Please note, compounding is not the relaxation in the penalty. Compounding penalty को relax नहीं करता. Compounding is only relaxing the imprisonment. Correct? ये अब आगे बढ़ते हैं. 138. What is 138? Any officer under this act may either before or आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन. मतलब या तो प्रोसिक्यूशन हुआ नहीं है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो वो कंपाउंडेड बाय द कमिश्नर. कब? ऑन पेमेंट. सिर्फ बातों से कंपाउंडिंग नहीं होगा. दैट मिस्टर ए हैज टू मेक द पेमेंट बाय द पर्सन एक्यूज्ड टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, एज द केस में बी, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? वी विल डिस्कस इन द रूल 162. Nothing contained in this section shall apply. एक बार मुझे क्विकली आंसर कर दीजिए. What is the meaning of this word? What is the meaning of this word? एक बार मुझे आंसर कर दीजिए. We have discussed in the last class also. But what is the meaning of nothing contained in this section shall apply? Yes. इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर जो भी बात हमने पढ़ी है वो अप्लाई नहीं होगी. किस केस में? इस क्लॉज में अप्लाई नहीं होगी. मतलब क्या? सिंपल सा बात है भाई, उसको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी. इन दिस केस नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई. मतलब जो भी बात इस सेक्शन में लिखी गई है दैट विल नॉट अप्लाई इन दिस केस. क्या है? ए पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द क्लॉज ए, क्लॉज एफ, क्लॉज एच, क्लॉज आई, क्लॉज ए. तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार रेफर कर लेना. मतलब आप, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. ए क्या है? ए तो गुड्स की सप्लाई विदाउट इनवाइस है. एफ क्या है? एच क्या है? आई क्या है? एल क्या है? नॉट जे, बिकॉज जे एंड के हैज बीन ओमिटेड. अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी कंपाउंडिंग ले चुकी है किस ऑफेंस में? इन ऑफेंस के रिगार्ड में, तो उसे सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा. दूसरा क्लॉज सी. अगेन देखो, क्लॉज ए के बाद डायरेक्टली सी. इट मींस क्लॉज बी पहले था बट बाद में ये ओमिट हो गया. सिमिलरली ई पहले था बट बाद में ये ओमिट हो गया. A person who has accused of committing an offense under clause B of subsection 1 of 132. मतलब क्या हुआ? फेक इनवॉइसिंग. करेक्ट. 132(1) भी तो हमें बहुत अच्छे से याद है. A person who has been convicted under this act by court. मतलब कोई और ऑफेंस उसने किया है इन दिस लॉ विच हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, उसको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, और एनी अदर क्लास ऑफ द पर्सन जो भी प्रिस्क्राइब हो गया. तो इन चार केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ फर्दर इट सेज प्रोवाइडेड फर्दर एनी कंपाउंडिंग अलाउड shall not affect the proceeding instituted under any other law. तो अगर कंपाउंडिंग कर दिया है तो बट एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस लॉ, और किसी ऑफेंस में कोई अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा. कंपाउंडिंग shall be allowed only after making the payment of tax, interest and penalty in that offense. मतलब नो रिलैक्सेशन इन द टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, वो तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा. उसके बाद आप कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं.
amount for compounding of offense under this section shall be such as may be prescribed. कहां पे रीड करेंगे? 162 में अभी here is covered. Subject to the minimum amount not being less than 25% and the maximum amount not being more than 100%. ये पहले अमाउंट बहुत ज्यादा था, it has been reduced क्योंकि compounding the people are not preferred. What is the minimum amount? Minimum amount not less than 25% or maximum amount not more than 100% of the tax. On payment of such compounding as may be determined, no further proceeding shall be initiated under this act against the accused person in respect of the same offense. And any criminal proceeding if already initiated shall stand abated. ठीक है, अब एक बार हम quantification की बात करें. Multiple time I have seen the question are very interesting question on this chapter, on this particular topic, compounding. Imprisonment remaining रहेगा ना सर? Also तो जेल की हवा. As per the provision of 138(1), any offense may be compounded by the commissioner either before or after the institution upon payment. On receipt of the application from the applicant, the commissioner shall call for a report from the concerned officer with reference to the particular furnished in the application, which may be considered relevant for examination. Once satisfied, then applicant has made full and true disclosure of the fact. The commissioner may, by order allowing the application, indicated the compounding amount discussed in the subsequent para. ठीक है, and grant him the immunity from prosecution or reject such application within 90 days. What is the immunity? That immunity from the prosecution. The application shall not be decided without opportunity of being heard, shall not be allowed unless the tax interest penalty being paid, shall within a period of 30 days from the date of the receipt of the order pay the compounding amount as ordered by the commissioner and shall furnish the proof of such payment to him. In case the applicant failed to pay the compounding amount within 30 days, the order of the compounding shall be vacated and be void. अगर वो पे नहीं कर पाता तो वो order void हो जाएगा. However, the following offense shall not be compounded. Correct, हम बात कर चुके हैं. Compounding shall be allowed only after making the payment. Amount of the compounding under this section shall be subject to the minimum limit of 25% and maximum limit of 100%. ये tax interest penalty सभी का है, सिर्फ tax का है, only tax. will be based on the discussion. नहीं, यहाँ पे ना कुछ क्वांटिफिकेशन उन्होंने ऑलरेडी कर दिया 162 में. 162 में कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया क्वांटिफिकेशन का परसेंटेज का. ठीक है, बट हाँ डिस्क्रिशनरी पावर है. बट एक बार हम ये 162 के बाइफर्केशन को रीड करते हैं. ठीक है, अभी क्या कह रहा है? ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. क्या है 132(1)(a) वाला? लेट मी ओपन दैट इंस्टीट्यूट का मटेरियल वंस अगेन. एक पैरेलली हम लोग 132 वाला चैप्टर 132 वाला सेक्शन भी ओपन करके रखते हैं तो इट विल हेल्प अस. ठीक है, अप्लाई एनी गुड्स विदाउट द इश्यू ऑफ द इनवॉइस. ठीक है, ये हमें मालूम है. मूव फर्दर. ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 132(1)(a. ठीक है, देन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 132(1)(c. क्या है सी वाला? जहां पे वो फेक इनवॉइसिंग के बेस पर आईटीसी लेता है या फ्रॉडुलेंटली रिफंड ऑब्टेन करता है. नहीं, fraudulently avail the ITC, sorry, avail ITC using the invoice or bill or fraudulently avail the ITC without any invoice or bill. ठीक है, फेक आईटीसी की बात हो रही है यहां पर. It is applicable to the professional also. Go to the section 138. By the person. So it means it include everyone. They have not used the word registered person. They have not used the word registered person.
That's the beauty. It is only talking about by the person. So the answer would be Madhav, yes. Everyone knows that case. Everyone knows that case, correct? But why he will pay the tax, interest, penalty? Because that particular was obviously, if he's not involved, then why he will pay the tax, interest, penalty, huge amount, correct? Na? So let's move further. 132 1C. What is the C? Avail the ITC. Okay. Then offense specified in 132 1D. What is the 132 1D? Collected but not paid beyond a period of 3 months. Okay. What is the 132 E? Go to E. Evade the tax or fraudulently obtain the refund. Okay. This 4 offenses. Clause A, Clause C, Clause D and Clause E. So quantification क्या है? Compounding if the offense punishable is under 132 1I. Compounding if the offense is punishable under 132 1(2). Clause 2. Tell me, यहाँ पर offense कब punishable होता है? अगर amount involved is greater than how much? The offense will be punishable in the clause 1 if the amount defaulted, amount of the tax, is being more than 5 crore. And when the offense would be punishable in the clause 2 if the amount is more than 132 1(2) में कब फॉल करेगा? अगर amount of the tax, amount of the default involved is more than 2 crore but up to 5 crore. more than 2 crore है बेटा, ठीक है? more than 2 crore है, ठीक है? तो यहां पर देखो, अदरवाइज मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लग सकती, कितना कंपाउंडिंग फीस है? व्हाट इज द मैक्सिमम कंपोनेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपाउंडिंग फीस इन द सेक्शन? इट कैन बी 100%. 100% टैक्स का या 100% टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, तीनों का है? Will it be 100% of the tax or 100% of the tax, interest, penalty, everything? The answer is 100% of the only tax. Maximum है, correct? And minimum कितना है? 25. तो 25 से 100 की रेंज हो सकती है, ठीक है? बट यहाँ पे 100 की रेंज को और इन्होंने लिमिट कर दिया और इन्होंने रिड्यूस कर दिया. किसने? रूल ने. कहा कि अगर ये 4 ऑफेंस है, क्लॉज ए वाला, क्लॉज सी वाला, क्लॉज डी वाला, क्लॉज ई वाला, अगर ये 4 ऑफेंस है तो क्वांटिफिकेशन कितना होगा? 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेटेड और द अमाउंट ऑफ ITC wrongly availed or utilized or the amount of the refund wrongly taken subject to minimum 50% of such amount of the tax evaded or the amount of the ITC wrongly availed, utilized or amount of the refund wrongly taken. Maximum 75 और minimum कितना कर दिया? Subject to the minimum of 50%, ठीक है? अब अगर मेरा जो ऑफेंस मिस्टर ए ने कंडक्ट किया मेरे एग्जांपल में, if it is covered in the clause 2, then what would be the compounding fees? Up to 60%, 75 की जगह 60 और जो 50 था उसकी जगह कितना कर दिया? 40. तो आई थिंक आर प्रसाद, यू गॉट द आंसर ना? इट इज नॉट कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिसर, थोड़ा रेंज स्पेसिफाइड कर दिया रूल 162 ने, करेक्ट? very very important, I'm again saying because it is amended provision and offense के ऊपर मैंने normally क्वेश्चन एग्जाम में देखे, तो make sure कि आपको क्लॉज भी याद रहे, make sure क्वांटिफिकेशन भी आपको याद रहे. क्या है क्लॉज ए, क्या है क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर. अब बात करता है क्लॉज एफ की. क्या है क्लॉज एफ? लेट्स रीड द क्लॉज एफ. क्लॉज एफ इज सेइंग falsify or substitute the financial record or produce the fake account or document or furnishing the false information with an intention. With an intention to evade the payment of tax under this act. ठीक है? Then clause H. Clause H क्या है? वो गुड्स जो एक्वायर करता है, पोजीशन या कोई ऐसे गुड्स में डील करता है which is liable to be confiscated under this act. Then clause I.
क्लॉज आई में कौन से सर्विस वाला पार्ट, receive or concern in supply the service which he know is a contravention of any provision of the act, correct? And last is offense specified in the clause I of the section 132(1) that we know more than that this करो, ठीक है? क्लॉज बेसिकली बचा एच आई हो गया, आई के बाद क्या है, बस आई इज द लास्ट, ठीक है? तो यहाँ पे कौन कौन से कवर हो गए, क्लॉज एफ, क्लॉज एच एंड क्लॉज आई, जहां पे क्वांटिफिकेशन के अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड, हियर दे आर सेइंग एग्जैक्टली 25%। यहां पे क्या हुआ बेनिफिट कि यहां पे जो मैक्सिमम 100% वाली लिमिट है वो राइट ही नहीं है उसका, यहां पे मिनिमम लिमिट ही लिमिट बन गई। तो इन दिस केस क्या ऑफिसर 100% ऑफ द टैक्स का कंपाउंडिंग फीस लगा सकता है, आंसर इज नो, ठीक है? क्लॉज एफ, क्लॉज एच एंड क्लॉज आई में, ठीक है? नाउ attempt to commit the offense or abet the commissioning of the offense specified in the clause A, comma clause C to clause F, clause H and clause I. Attempt to commit the offense or abet the commissioning, मतलब मैं help करता हूं for that commissioning of the offense. मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूं जो कि कमिट करता है अबेट द कमिश्निंग। यहां पे सिर्फ क्लॉज एफ तक लिमिट है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्लॉज ए कॉमा क्लॉज सी, एफ, सी टू एफ, क्लॉज एच एंड क्लॉज आई, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड और रिफंड रॉन्गली टेकन। एक बार जस्ट क्विक आंसर देना मुझे, हर जगह हम और की बात कर रहे हैं। टेल मी द प्रोविजन वेयर वी आर डिस्कसिंग the ITC wrongly availed and utilized. I know that I have asked the question, might be in the previous class also, but it is important, therefore I'm asking, कहां पे and है, availed and utilized? मैक्सिमम जगह हमने बात की availed और utilized की। Tell me where we have discussed, in some provision we have discussed ITC wrongly availed and utilized. Waiting for your answer. वेटिंग फॉर योर आंसर कि कहां पर अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जहां पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कब लगेगा, अगर हमने आईटीसी रॉन्गली अवेल की है और साथ में उस रॉन्गली अवेल को यूटिलाइज भी किया, देन ओनली द इंटरेस्ट वुड बी लेविएबल। यहां पर अटेम्प्ट टू कमिट या ऑबेट और अबेट द कमिश्निंग, मतलब मैं हेल्प करता हूं, देन इन दैट केस क्या होगा, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% विल बी द कंपाउंडिंग फीस एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25%। यहाँ पे क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से ज्यादा, इन बोथ द केसेस द क्वांटिफिकेशन कितना है, 50%, 25%। वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड बाय द पर्सन fall under more than one category, in such case shall be the amount determined for the offense for which higher compounding amount has been prescribed। मतलब क्लॉज ए में भी फॉल करता है, क्लॉज सी में भी फॉल करता है, क्लॉज ई में भी फॉल करता है, क्लॉज एफ में भी फॉल करता है। तो जहां पे हायर अमाउंट होगा दैट विल बी वो स्लैब उसके लिए एप्लीकेबल होगी। ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग अमाउंट नो फर्दर प्रोसीडिंग shall be initiated under this act against the accused person। एक बात अगर आपने गौर किया होगा ना, if you see which all clauses has been covered in the rule, A has been covered, C has been covered, D has been covered, E covered, F covered. Which one is covered? A covered, B is not covered. Point to be noted, B is not covered. B appear to be serious in the nature. Fake invoicing को serious देखा गया because of two reasons which we have understood right now। यहाँ पर imprisonment के लिए quantification कितना है, if someone will involved in this offense तो उसको imprisonment हो सकता है अगर amount of the tax is more than
1 crore, 2 crore, 5 crore? आंसर इज 1 करोड़. एब्सोल्युटली करेक्ट आर प्रसाद. अमाउंट इज 1 करोड़. बाकी सभी के लिए 2 करोड़ था. ठीक है. दूसरा, ये 138 के कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस में जो रूल 162 स्पेसिफाई कर रहा है, कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है. एफ कवर्ड है, एच कवर्ड है, आई कवर्ड है, कहीं पे भी उसको रिलैक्सेशन नहीं दिया है. ठीक है ना. एंड रेस्ट ऑल आर गिवन द रिलैक्सेशन. यहां पे भी देखो, अबेट द कमीशनिंग ए है, बी को हटा दिया, सी टू एफ है, एच और आई है, सभी कवर्ड है, बट बी नॉट कवर्ड. तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है जो पूछा जाए, मे बी दैट कुड बी फॉर द क्लॉज बी, दैट कुड बी फॉर द क्लॉज बी, एंड दे आस्क कि भाई अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो कितना कंपाउंडिंग लगेगा, अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो कितना कंपाउंडिंग लगेगा. इन एवरी केस रूल 162 डज नॉट स्पेसिफाई द क्वांटिफिकेशन फॉर दिस ऑफेंस, एंड देयरफॉर मिनिमम या मैक्सिमम जो हमने बात की है ना, वो ऊपर है. हाँ, दूसरा है ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस जो है वो टैक्स कंपोनेंट का ध्यान रखना. ऐसा नहीं है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी है, तीनों सिर्फ टैक्स की है. और कंपाउंडिंग कब इनिशिएट होगी? when we have paid the tax, interest, penalty, everything. Correct. On payment of such compounding amount as may be determined by the commissioner, no further proceeding shall be initiated against the accused person in respect of the same offence, and any criminal proceeding if already initiated shall stand abated. Immunity granted may at any time be withdrawn by the commissioner if satisfied that such person in the compounding proceeding concealed any material particular or had given the false evidence. तो मतलब जो उसको इम्यूनिटी दी है, इम्यूनिटी किस रेफरेंस में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बट इम्यूनिटी इज विद रिस्पेक्ट टू, इम्यूनिटी इज विद रेफरेंस टू कंपाउंडिंग में. इम्यूनिटी किसकी मिलती है? टैक्स की मिलती है, इंटरेस्ट की मिलती है, या पेनल्टी की मिलती है? आंसर इज इम्प्रिजनमेंट. तो जो भी इम्प्रिजनमेंट की इम्यूनिटी दी गई है, दैट कैन बी विड्रॉन बाय द कमिश्नर अगर उसे कुछ भी लगता है कि जो भी एविडेंस दिया था वो कोई पर्टिकुलर मटेरियल उसने मिसलीड किया या फॉल्स एविडेंस दिया, समथिंग. सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच इम्यूनिटी वाज ग्रांटेड और फॉर एनी अदर ऑफेंस दैट अपीयर टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम इन कनेक्शन विद द कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग. नाउ एथिक्स. लेट्स मूव टू द एथिक्स पार्ट. ठीक है. Doctrine of merger applied here. GST, you are talking about the GST law. करेक्ट. यहां पर मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं होगा. वट डू यू लाइक टू आस्क समथिंग स्पेसिफिक? माधव, क्या क्वेश्चन आपका थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे तो मैं शायद आंसर कर पाऊं ज्यादा बेटर तरीके से. देन विल मूव टू द एथिक्स. मेरे हिसाब से यहां पर अप्लाई नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज बीइंग स्पेसिफाइड. अदरवाइज कोर्ट है तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है. कोर्ट कैन डिस्क्राइब मल्टीपल जजमेंट आर कमिंग. Like for example, one of the judgment I'm talking about, just only for your practical understanding I'm sharing. See, we know that sometime the officer are levying the penalty under section 125. Let's say I am supposed to file my GSTR9 within the due date. If I not file the GSTR9 within the due date, then there is only late fees under section 47, correct? But is there any penalty prescribed in the law for non-delay filing of the GSTR9? No, it is not being specified. Let me tell you once again, आप एक याद करो, we have discussed this circular 76. We have discussed this circular 76 जब हम 73 74 की पेनल्टी की बात कर रहे थे. तो वहां पे एक पॉइंट पड़ा था कि डिले इन फर्निशिंग द GSTR 3B. See, we knows that amount of the tax which is collected but not paid within 3 months, then it is an liable to be punished. Correct. 122 में भी था, 73 74 में अमाउंट टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड. तो पॉइंट ये आया उस सर्कुलर 76 में, क्या जब टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड कर दिया बिकॉज 3B हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, कैन दैट पर्सन बी स्टिल लायबल अंडर 73 74? आंसर वाज नो. बट उस सर्कुलर में उन्होंने क्या किया, द पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 मे बी लेविड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. बट समटाइम आई एम सेइंग, देख मैंने अभी क्या बात की, सेक्शन की बात की, फिर मैंने नोटिफिकेशन की बात की और सर्कुलर की बात की. दे आर सेइंग बट स्टिल
the one of the judgment has given the answer, given the judgment hearing held that if the late fees is levied, then no penalty will be leviable. तो माधव ऐसा हो सकता है, the magistrate or the judges can decide, but there is no provision in the law as such. Ethics under GST, क्या मतलब होता है ethics का? And it is important because see, abhi we all are young chartered accountant, which you will become the chartered accountant in the time to come. तो ethics follow करना बहुत जरूरी है, correct? What is the meaning of ethics? Oxford Dictionary defines the terms ethic as the moral principle that govern a person's behavior or how an activity is conducted. Ethics provide a framework for distinguishing between the right and the wrong, guiding the decision making, determine what is considered morally acceptable in the given context. Ethics are fundamental to be the effective functions of any taxation system that also hold good for the GST regime. Ethical conduct contribute to the increased regulatory compliances and reduce the tax evasion, which in turn lead to increased government revenue collection. This tax revenue can be used for the public welfare and development project. This also help in creating a fair, transparent, and trustworthy tax environment and reduce uncertainty that support economic growth and development. Ethical practice like issuing the bogus invoice. We have heard multiple cases. With respect to fake invoicing, bogus ITC. Unethical practice not only undermine the tax revenue but also create an uneven playing field for the honest taxpayer. Ethical behavior may also reduce the tax-related disputes and litigations. Role of chartered accountant in ensuring the ethics under GST. The professional behavior of a chartered accountant is governed by the set of ethical guidelines and principle जो हमारे इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स लेट डाउन बाय द ICAI. Even chartered accountant has to abide by this code of ethics. It encourages the CA to be honest, fair, and professional in their working and advocate to follow the rules to ensure that they are doing the right things for their client and public at large. Fundamental principle क्या है? Are integrity, objectivity, professional competency, due care, confidentiality, professional behavior. CA Act 1949 prescribes the disciplinary action if the chartered accountant is found guilty of any professional or other misconduct. The same has been discussed in the chapter 19 professional ethics and liability of the auditor in paper 3. So advanced auditing वाले paper में ये काफी detail में discuss किया हुआ है. Chartered accountant in practice would be deemed to be the guilty of the professional misconduct under this clause 7 of the para 1 of the second schedule. So we are not. What is the second schedule of the GST? Second schedule क्या है GST का? What is the second schedule of the GST Act? I am not talking about chartered accountant. ये तो मैंने ऐसे रेफरेंस यहाँ का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, but still I like to go and compare something else. Second schedule of the GST law क्या है? Very nice, R Prasad and Hemant. Correct. हम यहाँ पर GST लॉ नहीं पढ़ रहे. We are only talking about the Chartered Accountant Act, जहां पर ये मिसकंडक्ट डिफाइंड है. शेड्यूल 1 नहीं, सेकंड शेड्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, क्लॉज 7 पैरा पार्ट 1. ठीक है. If it does not exercise the due diligence or is grossly negligent in the conduct of the professional duty. Further, as per the clause 8 of the part 1 of the second schedule of the Chartered Accountant Act, a chartered accountant in practice shall be deemed to be the guilty if you fail to obtain the sufficient information which is necessary expressing the opinion or its exception are sufficiently material to negate the expression given in the opinion. A chartered accountant need to follow ethical conduct while discharging his professional duty under the GST law, namely compliance functioning. क्योंकि देखो कई सारे so if you see that the different case,
जहां पे हमारा सीए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है. इफ यू सी द जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न जहां पे फाइल करते हैं, वहां पे भी रिक्वायरमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट की. एट वेरियस प्लेसेस वी नीड टू गिव द सर्टिफिकेट. There may be the chance that without obtaining the sufficient information, you are only issuing the certificate. One time you may get the work, but you will unnecessarily fall into the trouble of something else. So need to obtain the following, need to follow the ethical conduct while discharging the professional duty under the GST law, namely compliance or practice. He should maintain the professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employer receive the competent professional service based on the latest applicable position. मैं एक बात तो आप सभी को मतलब इंश्योरली कह सकता हूं, if you have the competency and skills, I can say that no one will be able to compete you. मतलब for the जैसे I heard sometime कि यार there is no something, there is no such growth or something like that, but make sure that you are having the professional competency, then it will only be the timing difference, I can say, with respect to the growth. ठीक है. In case of any violation of the law, in performing the compliances, certification and reporting and advisory function shall also be liable to the applicable penalty and prosecution under GST law. Chartered accountant plays a crucial role in ensuring the GST compliances within their client organization. This involves assisting the process of obtaining the registration, structuring the transaction and condition stipulated in agreement for making or receiving the supply, optimizing the tax position, ensuring the necessary compliances, including EV bill, payment of tax, TDS or TCS compliance with anti-profiteering provision, and timely filing of the periodical returns. Generally, the chartered accountant are responsible ensuring the maintenance of accurate and detailed record of all GST related transactions. This include invoice, receipts, other relevant documents. Such record keeping is a legal requirement as well as ethical duty of the chartered accountant. Another major responsibility of the chartered accountant in the GST is to act as a tax advisor to the client. This entails a comprehensive understanding of the client business operation and the goals. Chartered accountant must assess the impact of the GST on the various aspects of the business, including supply chain, pricing, financial reporting, etc. Chartered accountant who hold the certificate of practice and who has not been debarred from the practice can also appear on behalf of the client before the GST officer, appellate authority, or appellate tribunal in connection with any proceeding in the law. तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी बन जाएंगे and you are the chartered accountant and not leaving the COP, then also you can appear before GST officer, appellate authority, and appellate tribunal. Further, chartered accountant may they play the vital role in the GST ecosystem by providing certification that affirm the compliance with the GST law and regulation. See, अभी recent certification जैसे अगर मैं बात करूं, like circular 183 and circular 193, which was talking about the mismatch between 2A versus 3B in the initial years, like 17, 18, 18, 19, till 8th of October 2019, means 9th of October 2019, Rule 36 of Rule 4 was inserted. But prior to that, there was no legal compliances, there was no legal rule which was talking about that you can take the ITC only if it is appearing in 2A to B. नहीं, ऐसा कोई provision ही नहीं था. In that case, if you have taken that particular ITC and there is a mismatch, then what circular 183 is being prescribed? Answer was circular 183 has given the guideline regarding if the mismatch is up to 5 lakh, then obtain the supplier certificate. If the mismatch is more than 5 lakh, then obtain the CA certificate. See, the reliance level of the government also try to understand. They are saying lower amount है तो सप्लाई का सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट है तो सप्लाई के सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा. वी नीड द सर्टिफिकेट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, करेक्ट. तो वो सर्टिफिकेट हमें चाहिएगा. सिमिलरली इन द डिस्काउंट ऑल्सो देयर वाज रिसेंट क्लैरिफिकेशन. कैन एनीबडी टेल मी डिस्काउंट के रिगार्ड में क्या क्लैरिफिकेशन था?
what was the requirement or rule, what was the requirement or clarification for obtaining the certificate in respect to discount? कोई मुझे बता सकता है? Can anybody tell me that what was the requirement? Valuation के chapter से बात कर रहा हूं मैं. I'm talking about with respect to the valuation chapter, obviously. Waiting for 1 minute, else I will start. (15) subsection 3 clause B, clause 2. Quickly tell me, post supply discount के लिए क्या condition है? If I'm giving the discount to you after the supply, I'm specifically talking about the provision of section 15 subsection 3. I'm not saying that you should remember the section number, not at all. सेक्शन नंबर या रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको प्रोविजन भी बता देता हूं. मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कंडीशन जो लॉ में लिखी गई है विद रेस्पेक्ट टू पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. इफ आई हैव गिवन द सप्लाई टू यू नाउ, लेटर स्टेज आई एम गिविंग द डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. तो वो डिस्काउंट के लिए मैं जीएसटी का क्रेडिट नोट, व्हेन आई कैन गिव द जीएसटी क्रेडिट नोट टू माय कस्टमर. एनी वन और टू कंडीशन, एनी वन और टू कंडीशन, एक या दो कंडीशन अगर आप मुझे बता पाए, इट वुड बी ग्रेट. नो? If you are not able to recall, then kindly confirm no, sir, not able to recall, or simply say no. No problem, beta. The answer is, if you go to that provision 15(3)(b), yes, Madhav have given the one correct answer. Prior agreement has to be there on or before the supply. And the second condition, Madhav or any participant, if you can recall, कि वो दूसरा requirement क्या था? That was talking about ITC has been reversed by the recipient. मैं supplier हूं. If I am giving the GST credit note to you, you are my customer, then second clause 15(3)(b)(2) was talking about it should be linked to the relevant invoices and ITC has been reversed by the recipient. So on an average, I am saying there are 3 points which should be there for giving the GST credit note. Agreement, linking with the invoices and ITC reverse. But problem क्या थी? If I am a supplier, I cannot identify whether my recipient has reversed the ITC or not. Same thing for 15(3)(b)(2) ka compliance is the CBIC has given the circular 212 and in which they have asked again role of chartered accountant was added. Again, the higher amount of the ITC is involved, then they need the CA certificate. So primary aim at curbing the unethical practice and preventing the leakage of the revenue, thus it is the duty of every chartered accountant to exercise utmost care and due diligence while granting the certification. While providing said certification, the chartered accountant has to comply with the ethical requirement of the Code of Ethics. The relevant applicable requirement of the SQC standard on quality control for firm that perform audit and review of the historical financial information and other assurance and related engagement. The certification or reports required to be furnished by the chartered accountant have been explained in detail herein under. Let's take another. I request. Standard. So I request again to take the break of 10 minutes only, and we will resume at 8:10. We will resume at 8:10, and then we'll start the balance part. ठीक है? So अशोक जी एक बार ब्रेक स्टार्ट कर दीजिए 8 से 10 मिनट.
type of the certification requirement. What all the certificate will be required? Like for example, certification, the amount of the ITC claim at the time of the registration or voluntary registration or switching the regular to the composition or coming into the tax paying status. Switching to the regular, not composition, switching from composition to regular. Then it is basically section 18 subsection 1. There are multiple clause A, clause B. Then we need to provide the certificate. So 18(1)(a) basically talking about person who has applied for registration within 30 days from the due date on which becoming the liable to be registered. So I'm not going into the discuss 18(1)(a) क्या था, B क्या था, C क्या था, D क्या था, but we are eligible to take the ITC. So उसमें हमें CA सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती थी. In all cases आपको ITC 01 फाइल करना होता है फॉर्म specifying the details of the relating to the ITC contained in the goods, semi finished goods और capital goods भी होता है. अगर मैं composition वाले clause की बात करता हूँ, it says that if the amount of the ITC put together CSI exceed 2 lakh, then आपको practicing chartered accountant या cost accountant का certificate required है. Similarly, if I talk about the sale, merger, demerger, amalgamation 18 subsection 3, यहाँ पर कौन सा फॉर्म फाइल होता है? ITC 02. You again need the CA certificate. ठीक है. 89(2)(m रूल सेक्शन 54, अगर रिफंड का अमाउंट एक्सीड होता है 2 लाख से ज्यादा, इन दैट केस यू नीड द CA सर्टिफिकेट. वहां पे 54 सबसेक्शन 8 एक ऐसा सेक्शन था जहां पर कुछ एक क्लॉज में अनजस्ट एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, तो वो क्लॉज में एक्सेप्शन है. बट अदरवाइज इफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड इज मोर देन 8 lakh, more than 2 lakh, then yes, you need to provide the CA certificate in the RFD 01. Certification of the amount of the ITC to be reversed or cancellation of registration or switching to the composition, exit from the tax paying status in respect of the input for which tax invoice are not available. So 89 to section 29(5), 18(4) और rule 44(m), यहाँ पे भी CA certificate की requirement होती है. Again, audit report under section 66, that is audit by the chartered accountant और cost accountant. Correct. ये जो audit होती है, this audit is from the department, but वहां पे जो nominated person होते हैं, nominated professional है, then they can allotted by the department. So इस केस में भी आपको being a CA, you need to provide the reports etc. ठीक है. अभी हम आते हैं case studies में. The case studies have been incorporated to clarify example the sum of the ethical consideration that the chartered accountant should bear in mind issuing various certificate or reports under the GST as well as while giving the GST related advice to the client. Case study 1 पे आते हैं. ठीक है. L&T company, a partnership firm with two partner X and Y, is registered under Kolkata. It is engaged in supplying the material used for construction related activities. X and Y are friend to each, and each of them have also their own separate sole proprietorship firm engaged in supplying the construction material. These firms are registered in the GST. A is the tax consultant of L&T company. Mr. X get an offer from a customer WPL to issue some supply related bill to meet the budget allocation to the WPL by their management in relation to the civil work. Mr. X shall earn a commission of 20% of the value of the supply charge in supplying the bill accepted by WPL. X agreed to share 50% of his earning with Mr. Y. For undertaking the above project, L&T company need a bank loan for expanding the business operation and supplying the bill issued to WPL will inflate the turnover of L&T Co. X and Y sought the advice from the tax consultant A how to execute the above project for supply the bill to WPL based on the guidance provided by Mr. A. It is executed as below. L&T company shall issue the supply related bill for steel, stone, cement of 280 lakhs to Mr. X, wherein the delivery site shall be the WPL bill to ship to model. X shall avail and utilize the ITC
on the bill of 280 lakh and separately enter in the contract with the WPL for supplying the steel, jellystone, cement, etc. to be used for construction of the foundation of the plant and machinery for 280 lakh. Further, Mr. X, in his individual capacity, shall issue the labor work related to the bill for 40 lakhs for assembly and erection work relating to the construction of the foundation of plant and machinery undertaken at the site of the WPL without actually providing any service. WPL will avail and utilize the ITC on the bill of the 280 and 40 used for underlying supplying the goods. X and Y, that inventory register are up to date for the material movement, compliance pertaining to e-way bill have been taken care, money shall be duly realized as per the bill issue. X approach his friend Mr. P, a chartered accountant, practicing chartered accountant, for seeking his help in the above arrangement. However, P, chartered accountant, makes Mr. X conversant with the following GST implication that may arise in the above arrangement. Issue of invoice by L&Co to Mr. X. Since there is only being an issuance of the tax invoice by the registered person, L&Co to registered person, Mr. X, without the underlying supply of the goods. Therefore, such activity does not satisfy the criteria of the supply. As there is no supply in respect of such tax invoice, no tax liability would arise, and accordingly no demand and recovery required to be made against L & Company under the provision of 74. A registered person shall, however, be liable to the penal action under, can you complete my sentence? In this case, L&Co will not be liable under section 74, but still the penal action can be liable under, absolutely correct, Gyanendra, 122. 122. हमने एक सर्कुलर रीड किया था, डिटेल्ड सर्कुलर, so which talks about for issuing the tax notice without the actual supply of the goods. This offense is also punishable with an imprisonment for a term which may extend to 3 years and fine. Why? Because it is more than 2 crore. Why? Because it is more than 2 crore, so it has been linked 130 to 12. Okay. Issuing the invoice by X to WPL. The registered person X has availed and utilized fraudulent ITC on the basis of the tax invoice issued by the that particular supplier, L&Co, and because he is not eligible to take the ITC, therefore there was no supply of the steel and etc. labor work related to the service by X to WPL. Thus, in respect of the said transaction, no tax was required to be paid in these cases. No demand in recovery of either ITC wrongly fraudulently availed by X in such case, or tax liability in respect of the said outward supplies by X to WPL is required to be made from X. However, in such case, Mr. X will be liable penal action both under 122.12 and 122.17. This we have already discussed in the circular while reading the chapter of 73-74. Okay. And this offense is also covered in the 130-12. WPL will be liable for the demand and recovery ITC that is not eligible and that is in violation of 16(2). Okay. So again 3 साल की जो imprisonment मिल सकता है because of practice shall also be liable to the penalty in terms of the provision of 122(3). Since in the given case he has added or abated the offense specified, this offense is also punishable and imprisonment subject to such condition. Correct. So P apprised Mr. X that if any chartered accountant advise Mr. X on the above arrangement, he will also be punishable with a penalty in terms of 122(3) for adding or abating the offense, and may also be punishable with the imprisonment subject to the specified condition. I hope you get the clarity. Let's move to the case study number 2. So we'll discuss till 8:45, and last 15 minutes of this class would be taken by the BOS respective faculties. So last 15 minutes हमारा कोई discussion होगा. If you have any question, so you may ask that any question. ठीक है. So we will continue till 8:45, and then last 15 minutes would be taken care by the Saif Ali ma'am. ठीक है. DLLC is entitled
entity registered in the Germany and engaged in providing online services across multiple countries, including India. The service offering includes certain services which are covered uh, within the purview of OIDAR. In short, I will use the word OIDAR. ठीक है? Liable. Just tell me, if supplier is located out of India, service nature is OIDAR, then when it is covered under mandatory category of registration. If service provider is outside India, nature of the service is OIDAR, when it will be covered in the mandatory category of registration. If the recipient in India, registered, unregistered, or both. OIDAR located out of India provide the service in India to registered person or to unregistered person or both. Then they will be liable to be take the registration mandatorily. अगर OIDAR सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड द सर्विस इन इंडिया, किसको सर्विस प्रोवाइड करें, तब दे हैव टू टेक मैंडेटरी कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है 24 क्लॉज 11 एंड 24 क्लॉज 11A में. मतलब इसमें क्या डिफरेंस है ओइडार वर्सेस ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसमें आप देख लीजिएगा. इन दिस केस द लाइबिलिटी वुड बी इफ द recipient in India is unregistered. If they will provide the service in India, I'm talking about OIDAR, then the recipient would pay the tax under reverse charge if the recipient is registered. If it is unregistered, then liability would be shifted to the OIDAR and then they will fall under mandatory category of registration. Both cases, whether recipient is a registered person or recipient is unregistered person located in India, in both the cases, the liability to pay the taxes would be on online money gaming. They have to take registration. ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है. मतलब इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है. OIDAR के केस में liability comes when recipient is unregistered and online money gaming में liability will come irrespective of the status of recipient in India. ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटर है एंड नॉर्मली स्किप हो जाता है. So the service offering include OIDAR liable to be GST in India since D LLC does not have any place of the business. It appointed one of its employee, Mr. X, as authorized representative for all the purpose in India, which include undertaking GST compliances and also authorized signatory for any other regulatory compliances. X is a partner in XYZ and associate post appointment of Mr. X. Following chain of event unfolded. क्या क्या इवेंट हुए देखते हैं. X being an authorized representative of Doodle LLC made an application for registration as an OIDAR and undertook the GST compliances. Subsequently, X started filing the monthly GST return and made the applicable GST on behalf of the Doodle. In lieu of such service, Mr. X was being remunerated a fixed sum on monthly basis as professional fees. The appointment of Mr. X was in personal capacity, not in a professional service contract with his partnership firm XYZ. However, for recovery of the amount of the fixed monthly remuneration, the invoice as export of the service were issued by the X in the name of the partnership firm. The corresponding refund benefit was claimed by the partnership firm for ITC against such export of the service invoice. A Doodle LLC appointed influencer in India to promote the service in India. The tax invoice were received by Mr. X in the name of XYZ and Associate and availed the ITC by the partnership firm for such service. Said ITC was utilized for further supply of the service. However, the actual service recipient in such case was Doodle LLC. Subsequently, Doodle LLC was required to submit certain affidavit and accounting record before the Enforcement Director ED. Being an authorized representative signatory of the Doodle LLC, Mr. X approached Mr. P, a practicing chartered accountant, to prepare the affidavit and accounting record, which include critical financial information and data of the Doodle LLC. He elaborated the entire arrangement
among Doodle LLC, X and XYZ associate to Mr. P. He further requested Mr. P to certify and attest the record, which would be prepared in compliance by Mr. P in the capacity of the practicing chartered accountant for submission before ED. P apprised Mr. X of the following GST compliances. Incorrect issuance of the invoice for export of the service and claiming the refund of the ITC on the basis of such export of service related invoices. X was appointed as authorized signatory and signatory in his signatory of the doodle in his personal capacity to undertake the compliances. However, the consideration was received in the name of the partnership firm. Further, such invoice was issued as export. Corresponding refund of ITC was claimed by the firm of is punishable as follows. Since Mr. X supplied the service to the Doodle LLC without any invoice, he shall also be liable for the demand and recovery along with penal action under Section 74. Even if the contention is made that invoice was issued by X, by the firm of X, the same shall be treated as incorrect invoice or false invoicing, as both X and XYZ is a separate legal entity as per the law. Since both X and XYZ are the different person, the invoice issued by the firm shall be construed as issuance of the invoice without supply of the service, that is offensible in the 122(1)(2). Incorrect refund was claimed by XYZ for ITC on the basis of incorrect invoice for export of the service. This is also an offense under 122(1)(8). Further, all the above offense may be punishable with imprisonment under 132(1) depending upon the amount. Availment of ITC without actual receipt of service. XYZ received the invoice from influencer who were actually providing the service to the Doodle LLC. Further, the ITC related to such invoice was availed by the XYZ in contravention of the provision of Section 16. Accordingly, ITC availed and utilized by the XYZ for further supply is incorrect. Therefore, XYZ and associate LLP will be liable for the demand and recovery along with penal action under Section 74 and interest under Section 50. GST implication on Mr. X. XYZ fully involved in wrongdoing in terms of the business transaction of the Doodle LLC. Further, he was the authorized representative and signatory of the Doodle LLC. X is liable to the penalty under 122(1)(a) and 122 subsection 3, since he is involved in aiding and abetting the offense committed hereunder at his instance and also derived monetary benefit for such practice. This offense may also be punishable with imprisonment and fine under Section 132 subsection 1, depending upon the amount. If the chartered accountant take up this assignment offered by Mr. X and attest to certify the Doodle LLC records that would be prepared by him for submission before the ED, he may be held guilty of the professional misconduct. Case study number 3. Fact of the case: ABC, firm of the chartered accountant, was impaneled with for 66 audit. X Limited, a registered person under GST, was selected by the commissioner for the special audit for a financial year on account of the irregularity noticed during the scrutiny. ABC was nominated by the office of the commissioner for a special audit of X. Assume the following event were unfolded. Appointment of a special auditor was based on the undertaking furnished by the firm that the partner of the firm or any of their relative are not directly or indirectly related to the auditing. However, while submitting the declaration, ABC failed to disclose the fact that spouse of one of the partner of ABC is working as full-time employment as head of the taxation department. So what will be the implication? Material discrepancy in the valuation of the stock transfer to the related party by the auditee were noticed by ABC. If ABC failed to disclose these material discrepancy in the audit report, what will be the implication? In case of the supply of the goods, without how we can identify it as offense? There is no disclosure, no sir.
Correct. So there would be some transaction. For example, like if it has been caught during the movement of the goods, the situation would be during the transit. If such goods are being detained or are being catched by the officer, then only it can be identified. Otherwise, it is practically difficult. But कोई ना कोई तो ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है इन ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ दैट गुड्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Or might be during the audit of recipient. Let's say A has given the supply to B without the cover of tax invoice, only goods. Now B, when received the goods, and while doing the inventory or some stock audit by the auditor, they are found excess stock, and for further scrutiny of that records or books of accounts or any something like you can say the kacha records or something like that, they found that it has been supplied by Mr. A. So that could be the second case. Okay. Now the ITC claimed by X Limited under ITC 01 was certified by one of the associate firm of ABC in favor of X Limited. The certificate was based on the incorrect fact and against the eligible criteria of ITC as per section 18. However, if the ABC failed to exercise the due diligence and certificate is taken on record by ABC as an audit procedure is relied upon at the time of the finalization of audit report and submission of finding, what will be the implication? ABC received the consideration of 5 lakh in the name of the special audit conducted. Now, GST implication क्या होगा? False undertaking submitted before the office of the Commissioner GST and audit engagement undertaken on the basis of such undertaking. Essential terms of the appointment as a special auditor included that the partner or any of the relative are not directly or indirectly related to X Limited. If the spouse of one accepting such engagement tantamount to be the submission of the false undertaking by the chartered accountant firm to the government authority. Further, the questions may be raised about the independence of the audit team, considering the fact that spouse of the one of the partner is heading the key position in the X Limited. Non-reporting of material discrepancy notice during the audit procedure. ABC audit team does not exercise the due diligence to ascertain that ITC availed by X is not in compliance with the GST law. Instead, ABC relied on the certificate issued by its own associate firm, which justify the incorrect ITC claimed by X. In such a case, both ABC and associate firm, which issued the certificate to justify the ITC claim, were aiding and abetting the X Limited is wrongly availment of ITC, which is an offence under 122(3) and as well as 132(1). Receiving the consideration for special audit from the auditee, the consideration for the special audit is payable by the office of the commissioner and cannot be directly recovered from the auditee. I think you can recall the provision of section 66 in which it is clearly written that जो भी amount payable होगा वो commissioner decide करेंगे और commissioner ही pay करेंगे. In the present case, the receipt of the 5 lakh from the X, that is the auditee, by ABC is an offence under GST provision. The same is liable for the general penalty. Case study 4, last case study. X Limited is engaged in the business of manufacturing cotton yarn, wherein cotton is the principal raw materials in the manufacturing process. The price of the cotton varies depending upon the market condition and dependent on the various external factors. X is a consultant of A Limited. X advised A Limited on the GST compliances in order to meet expension related expenditure. A Limited sought a term loan and working capital loan from the bank. As per the bank, the turnover and profitability were not meeting the benchmark. So, accordingly, the following actions were undertaken by the X being the tax consultant. A separate entity, that is B Limited, was incorporated and the director of A were appointed as director of B. This ensured that control of the B remained under the directorship of A Limited. Further, B Limited obtained the GST registration as a manufacturing of yarn, wherein X assisted B Limited in obtaining such registration. X obtained the GST registration providing the fake document for registration. Subsequently, A started issuing the tax invoice for the supply of the yarn to B. However, there was no actual movement of the goods by A to B.
The tax invoice were issued and the same were reported in the GST return by A Limited. Further, B Limited availed the ITC of all such tax invoice reported by A. The finished goods related to such tax invoice were sold in the local market by A in cash without charging GST and without issuance of the tax invoice. B Limited issuing tax invoice for the provision of certain services to A Limited in form of testing of coat and repair maintenance of the machinery installed at A Limited. Apart from other services, however, no such service were actually provided by B to A. The ITC appearing in the books of B was utilized by B at the time of discharging the GST liability in relation to the least tax invoice issued against provision of service to A. Further, B Limited issued the invoice of the sale yarn least purchased from A Limited to the other group entity to ensure that stock of yarn becomes zero in the books at the year end. The tax invoice was issued at the rate lowered by 90% of the actual tax invoice received from A, containing that quality of the yarn has deteriorated during the storage. X was aware of the aforesaid transaction of A and B. Further, the return was filed by Mr. X for both the companies. A Limited approached Mr. P, the chartered accountant, to issue the relevant certificate to the bank, certifying the turnover of A and B as genuine turnover to ensure that required loan amount is sanctioned to A. A Limited elaborated the entire arrangement made by it with regard to B. तो क्या GST implication है, which P has explained. सबसे पहले 120 to 112, furnishing the false information with regard to the registration particular is an offense. ठीक है. B Limited is liable to the penalty under section 120 to 111. 12. Issuance of the tax invoice without actual supply of the goods or service. Following instance happened wherein there was no actual supply of the goods or services, however, tax invoice was issued. A to B, para 2, fake invoicing of fake issuance of tax invoice for by B to A, servicing, fake invoicing for goods by B to group companies. It will be liable under clause 2 and also in 132(1). Fraudulent ITC availment. B Limited availed the fraudulently ITC of the goods which were not at all received by B, and the same was used in discharging of the tax liability related to invoices issued without any underlying supply of the goods. B has availed and utilized the fraudulent ITC on the basis without the compliance of 16 to B. In this case, there was no supply by B to A in respect of said transaction and no tax was required to be paid in respect of said transaction. Therefore, in this specific case, no demand and recovery. Again, that reference of circular, which we've already discussed in the above case study. Okay. However, in case of B Limited, we are liable for the penalty in 120 to 12 and 120 to 17. This offense may also be punishable under 132(1). Incorrect information in the GST returns and falsification of the books of accounts. The GST return filed by the A and B were not backed by the correct information in terms of the supply. Knowing that there was no supply and ITC is not available, the return were filed by both the companies. The books of accounts and financial record were also falsified in terms of the information relating to the sale and inventory. This act of furnishing incorrect information in the return and falsifying financial record is an offense under 120 to 110. And this also liable for 130 to 1. GST implication on Mr. X. Mr. X, being a consultant of A, has adequate knowledge of the fraud and willful misrepresentation. ठीक है. Willful misrepresentation of the fact in terms of maintaining the financial records and submission of the information. In fact, Mr. X himself was filing the GST return, was aware of the fake invoicing and ineligible ITC. Mr. X shall be liable to the penalty under section 122(3), since in the given case he has added and abetted the offense. This offense may also be punishable under 132 subsection 1, depending upon the fact and amount. If the chartered accountant undertake the assignment of issuing relevant certificate to the bank, therefore certifying the turnover can be, he may be held guilty of the professional misconduct. Further, he shall also be liable to a penalty in terms of 122 subsection 3. This offense may also be punishable with imprisonment and fine under 132(1), depending upon the amount of the default involved and subject to the specified condition. So by this, we have completed the offense and penalty along with ethical aspect. Now we have the last 5 minutes. Similarly, we will, like in all the classes we are doing,
let me ask the quick round of question answer on this chapter. Give me the answer at 8:45, 8:46. The ma'am will take over the session. So after 5 minutes, just allow me 5 minutes only for asking the quick round of question answer. ठीक है? Any question I can ask? What is the quantum of the penalty in the 122(1)? अमाउंट कितनी पेनल्टी लगती है 122(1) में? What is the amount of the penalty in the 122(1)? Amount of the penalty under section 122 subsection 1. Answer is 10% of the tax or 10,000, whichever is higher. Absolutely correct. एक मेन डिफरेंस था 122(1) में, 122(2) में, 122(3) में. Like some are applicable on any person, some are applicable on registered person, some are applicable on taxable person. Can you please tell me that उन तीनों में डिफरेंस क्या था? 122(1) किस पे लगता है? Any person, taxable person या registered person? 122(1) I'm asking. 122(1) I'm asking. Answer is taxable person. Answer is taxable person. Can you tell me if person failed to furnish the statistics, then what is the quantum of the penalty? There is a one provision in the GST law that they require that yes, statistics can be asked. अगर वो statistics submit नहीं करता, like Reserve Bank of India, GST network, Electricity Board, Motor Vehicle Authority, जिसको भी बोला अगर वो information नहीं देता, let's say, in that case, what would be the quantum of the penalty? What would be the quantum of the penalty? The answer is it is in divided in two part. अगर first time offense है, then it will be up to 10,000, और second time है continuous है, then in that case 100 rupees per day subject to the maximum of 25,000, whichever is lower. And ये CGST की बात करें तो जितने भी पेनल्टी प्रोविजन है, जितने भी ऑफेंस है, इट विल गेट डबल्ड. जनरल पेनल्टी का अमाउंट कितना है? व्हाट इज द जनरल पेनल्टी अमाउंट? व्हाट इज द जनरल पेनल्टी अमाउंट? 25,000 CGST. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर माइनर ब्रीच है तो पेनल्टी नहीं लगेगी. If it is a minor breach, then there is no penalty. What is the meaning of minor breach? What is the meaning of minor breach? दो क्लॉज हमने बात की थी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट लेट मी रिपीट अगेन. आप मुझे बताइए कि माइनर ब्रीच किसको कहते हैं. यहाँ पे अगर टैक्स का कंपोनेंट कितना है? लेस देन 5,000. एंड एक बात और थी, अगर कोई भी ओमिशन या मिस्टेक है जो कि यस एब्सोल्युटली करेक्ट माधव, इजीली रेक्टिफिएबल है, देन दिस वुड आल्सो बी कॉल्ड एज easily that will also be called as a minor breach and no penalty. No penalty. Just एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक चार्ट कंप्लीट कर दीजिए. 129 की पेनल्टी आप मुझे बता दीजिए. जस्ट कंफर्म 129 की पेनल्टी. अगर ऑनर कम्स फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी, अगर ऑनर रेडी होता है, कम्स एंड कम फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी, देन व्हाट वुड बी द क्वांटिफिकेशन अगर ये टैक्सेबल गुड्स है, और व्हाट वुड बी द क्वांटिफिकेशन अगर ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. अगर ऑनर कम फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी, देन व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 अगर ये टैक्सेबल गुड्स है या एग्जेम्प्टेड गुड्स है? टैक्सेबल गुड्स है तो कितना? ये 100% नहीं है, ये 200% ऑफ टैक्स है. अगर ये गुड्स टैक्सेबल, 200% ऑफ द टैक्स पेनल्टी है, याद रखिएगा. अर्लियर इट वाज 100%, बट अभी अगर मैं बात करूं, काफी टाइम हो गया, 2-3 साल से ऊपर हो गया. सो नाउ इट इज 200% ऑफ द टैक्स. एंड अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड है तो कितनी पेनल्टी है? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000, विचएवर इज हायर की लोअर. विचएवर इज हायर की लोअर.
Right. R. Prasad, Madhav, Hemant, everyone, Ashutosh, lower. अगर ऑनर कम फॉरवर्ड डज नॉट कम फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी, गुड्स अगर टैक्सेबल है तो कितना क्वांटिफिकेशन होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी? अगर ऑनर डज नॉट कम फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी तो कितना अमाउंट लगेगा? लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, एंड देन आई विल गिव इट टू शेफाली मैम. 50% of the value of the goods or 200% of the tax, whichever is. मैं टैक्सेबल गुड्स की बात कर रहा हूं. 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स, whichever is higher. एंड अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड है तो क्या हो जाएगा? अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड है तो क्या हो जाएगा? 2% की जगह कितना हो जाएगा? 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000, whichever is 5% of the value, 25,000, whichever is higher की lower, whichever is higher की lower. Yes, lower. Exempted goods में हमेशा ध्यान रखना lower है और taxable में वो higher होता है. Taxable में वो higher होता है. Now it's over to ma'am, Saif Ali ma'am. From my side, the chapter is completed. So it's over to you. Yes. Thank you, sir. Am I audible? Yes, ma'am. आप audible है. Thank you for such an insightful session, sir. In fact, my objective was to take feedback from the students, but what I feel is कि सबको सेशन बहुत अच्छा ही लगा होगा. मतलब जो भी आपका फीडबैक है, कुछ आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है इसमें, तो आप वो भी बताएं, because we want these sessions to be most fruitful for the students. I think now my video is visible. Correct. Okay. One of my connections actually has been lost. So let me see. I would be actually switching off video for a while. Let me be connected from the other system. So, sir, yes, now I have been joined from the other system. And now it's fine. So first of all, I would like to know from the participants that what is their feedback regarding the session. If any of you can share your feedback regarding the sessions. In fact, I have seen that sir is explaining everything properly. He's trying to give you examples also, then trying to make you memorize the provisions, because that is also very important, because it's not an open book examination, it's a closed book paper. So we need to memorize the provisions, and if we do it in between when we are actually in the session, and that makes it interesting also, and it's useful for you also. So it's good that everybody has logged in through their names, and sir also stresses upon the same, because so that there is a better connect among the faculty and the students. So Ashutosh, Gyanendra, Hemant, Madhvendra, Revan and Madhav, any of you would like to share any feedback regarding the session, or some suggestions regarding the sessions which you feel that we can make to further improvise these sessions, something you feel that this should be done further to improvise the session? Any of you? No? So should I take that all of you are actually satisfied with the sessions, and you don't find any scope of improvement in these sessions? Gyanendra, you were saying something, na? Gyanendra, you were saying something regarding that practical class or something, कुछ आप कह रहे थे ना? Feel free to say something, Yes. यार. Yeah, the objective is to know that what else you want in these sessions. Correct. Madhvendra, you have also unmuted. Gyanendra, पहले आप बोलिए, फिर then Madhvendra, you speak, please. Gyanendra, over to you. Please say Good openly evening. everything. ठीक है. Yeah, good evening, ma'am. Sir is teaching very well and practical, providing also to us practical knowledge in the field. We are very thanks to sir and ICAI to providing such opportunity to study online. Earlier, there is no program. True, you are right. Either dependent on classes or self-study.
Now And these ICAI classes are providing free of charge. You can attend them from your home. So that is also a convenience, that you don't have to go to the center, or you don't have to visit anywhere to attend these classes. You can attend them from your home. That is also a privilege, na? But anything you yes, want to improve in these classes, you can also share that. And we request all the students to share the feedback form also. You can also request your students to attend these classes, because when you attend these classes live, that means you don't watch the recorded lectures. One way is to watch the recorded lectures. And I think many students prefer that, because they feel that once they are, back home, they want to relax, or they come back home late, so they are not able to attend these classes. There could be n number of reasons for not attending the live lectures, but what we suggest always is that you should attend the live lectures. There are a lot many reasons. First is you can get your doubts cleared. Second is you will be able to do that topic, or attempt the read or study that topic that day itself. That will not lead to procrastination, because that is something which is very harmful for a CA student. We generally tend to procrastinate our studies. We feel that today we'll not do, we'll do it tomorrow, day after tomorrow, next week, next day maybe. But that leads to actually a wastage of our time, and that leads to we not meeting our targets. Then it becomes a vicious circle. So ultimately we get demotivated, and we do not get stick, or we do not adhere to the schedule which we have made for our studies. So we always suggest that please try to attend these classes live, so that you can get your doubts resolved. You can cover your topic on the day the faculty has taken the topic, and you will be better. Since these sessions are very interactive, and sir also try to make it very interactive by asking you questions time to time. So he doesn't take the questions at the end of the session only. He takes these questions in between the session also. He keeps asking what is the difference between different sections, or he stresses upon the points which you should know. So there also, if you have some doubt, you can ask those questions then and there itself. So that does not, you don't have to keep your doubts waiting for the next session to come. So then there itself, you can ask the questions. So we suggest that you should attend these sessions live. Any further improvement you require, or you feel that can be made, we have feedback form also. You can share your feedback in that feedback form also, and we suggest that you should do that. Apart from that, there was some doubt in the session regarding, which sir has also clarified, that section 74A being applicable for May 2025 examination. In fact, regarding this, all the amendments which have been made by Finance Number 2 Act 2024 and Finance Act 2024. So since last year was an election year, there were two budgets. First was the interim budget before the new government was formed. And after that, the budget when the new government had been formed, then we had a budget in July also. So these two finance acts were there. The amendments made by the first Finance Act 2024, they have become effective from one of the amendments which is there in section 20, input service distributor, that became effective from 1st of April 2025, which will become effective. So, and the other amendments of Finance Number 2 Act 2024 that was enacted after the formation of the new government. So both these, most of the amendments of Finance Number 2 Act 2024 became effective from 1st November 2024. Now the cutoff date for May 2025 examination is 31st October 2024. So whatever amendments have been made have been made effective till 31st October 2024 are only applicable for your examination. That is why section 74A is not applicable. Section 73 and 74 are applicable, because they will be, one reason is they will be applicable from next financial year, and the cutoff date is also till the cutoff date they have not become effective. So if you see the amendments made by Finance Number 2 Act 24, which have become effective till 31st October, are only 3 amendments. In section 16, that is where we tell that the ITC can be claimed in the return filed for the revoked period within 30 days of the revocation of cancellation. Then section 109 and section 171. Section 109 will be discussed in maybe tomorrow or day after tomorrow's class. In Appeals and Revisions chapter, it will be discussed. Section 171 is the anti-profiteering authority, which is there in the miscellaneous chapter. So that there also this provision, the amendment will be discussed. Other amendments will become effective for November 2025 examination. Reason is because for November 2025 examination, the cutoff date is 30th April 2025.
So till that date, all these amendments will become effective, and then you can read those amendments. For the timing, these amendments have been covered at the end of the study material. In fact, sir has taught the entire chapter from the study material. So that makes you conversant with the study material also. You should go through the study material. What we suggest is that before every class, you should once read the topic or have a glance at the topic. What are the main provisions which are covered, so that when you come to the class, you are at least aware of the major provisions, or that will help you in a better understanding of the topic. Then during the class, attend the class attentively, try to make some notes. Sir will also share if PPT form is, if some PPTs he is preparing for some of the sessions, then those PPTs have also been shared with you. But you can make your own notes also. So after the class, during the class, whatever you have noted down, that is fine. After the class, go through the chapter once again and try to make proper notes for that particular chapter, so that day before examination, you can use these notes for the revision purpose. It is very important to prepare your revision material for your examination at this point of time only, because whatever we are doing at this point of time will help us at the time of revision. If we don't prepare any revision material and we feel that day before examination we'll be able to revise everything, syllabus is very vast, and you will end up leaving some of the important topics which you have done at present, but at that point of time you will not be able to revise, and that will leave you very disheartened, very discouraged before the examination. So please try to make some revision material ready, or for that, Saransh is also there. We have also given all the significant topics and chapters are there in the Saransh for indirect tax laws. You can refer that also. But otherwise, you can make your own notes also. And in fact, yes. Ma'am, after completing this class, whether any doubt class or amendment class will organize, it will be better if if you feel that you need some doubt class or you need some amendment class. Amendments, because everything has been covered in the classes. So Yes, we ma'am. did not thought of any amendment class, but if you feel that yes, there should be a separate class which covered the amendments of maybe Finance Act and past 6 months amendments, then we can have one such class. So you can give it as a suggestion also. I will also take note of it, that you want a separate amendment class and some doubt sessions. You need some doubt sessions. Ma'am, how to approach case-based questions which were asked in exam? It will take a lot of time to solve in the during exam period. So, which case-based? You're asking about the MCQ-based questions or descriptive part? descriptive part, ma'am. Case-based, either MCQs or descriptive. But in exam nowadays, start asking long case studies, and in IBS also there is case study, ma'am. IBS is fully case study based paper, and there every question is based on the case study which is given. Though in other papers you have at least some portion which has some straight questions. In case scenarios, the MCQ based portion, or you can say the 30 marks portion, 30% paper which is based on the MCQ, all the questions are application based question, and for that you have scenarios. So for GST portion, you have 2 scenarios. Generally, you get 2 scenarios, or 2 to 3 scenarios are there, and questions based on those scenarios are asked. So what we, for MCQ portion, what we suggest is that first of all, you go through the scenario, read the scenario once, then read all the MCQs, and try to connect the provisions which will be applicable for answering a particular question. For example, a value of taxable supply has to be computed, then you will have to see all the outward supplies, maybe application of section 15 or any of the rules thereunder could need to be applied, but that you would be knowing from the information which is given in the case scenario. So we have once gone through the case scenario, then you should, so when you are reading the MCQs, try to figure out the provisions which will be applicable for answering that particular MCQ, as well as the relevant information in the scenario which you will be requiring. So you will be requiring 2 things. First is the relevant information from the case scenario, try to locate that information. And secondly, the relevant provision which you would be requiring or you will be applying for answering that question. Then you will be able to answer that question. In MCQs, you need not provide any reasoning or any working. So that saves your time to some extent. So this is how we feel that MCQ portion should be solved. For descriptive question, generally what students find problematic is first compulsory question. Am I right? Or yes. Generally, first question is very problematic because it's a very comprehensive question which has the
applicability of all the substantive provisions, almost all the substantive provisions, whether it is a supply provision, exemptions are being tested, then charge provisions, the reverse charge provisions, sometimes some provision relating to composition scheme are also there. Then input tax credit provisions are being tested. So that question, sometimes students find it difficult. For that, first of all, you need practice. You need to have a thorough understanding of all the substantive provisions. That means if I talk about your study material, module 1 plus module 2, the first chapter, that is ITC chapter, all the provisions should be thoroughly understood. You should go through them properly. Then you should try to practice these questions from the ITC chapter as well as from the RTP. This May 2025 RTP has also been web hosted, and it will be soon available to you in the hard copy also. So you can go through that RTP, as well as the mock test papers. We have prepared a booklet of the mock test papers also. There also, every paper has this first question. So you can keep those papers for attempting after completing everything, or you can try it, you can break it down. Like first question, you feel that you have a problem, you can practice it. Now in first question, what is generally given to you? If you see the ultimate objective of the first question, generally what first question requires to compute is the GST liability, net GST liability. Now, when we have to compute the net GST liability, we require two types of information. First is basically, or very simply, if we draw it, then we need to compute the output tax and the input tax. And whatever input tax we can set off against our output tax liability, the net amount will be the net GST payable. So we have to, either the information regarding the outward supply and inward supply has been clearly given to you in the question, then you can easily identify it. Or sometimes all the transactions are given at one place. So you have to segregate the inward and outward supplies. You have to prepare two tables. So one, the final table, where you have to prepare the answer, would be consisting of the outward tax on outward supplies. And after that, when the entire output tax has been computed, you have to set off the ITC. For the ITC, you can compute ITC in the working notes. Points which you need to note here is that first of all, you need to see whether any exemptions are there in the outward supplies, whether any of the outward supplies are taxable under reverse charge provisions, because that also makes it it's an exempt supply. And many a time students forget this provision. Some of the outward supplies, I'm talking about the outward supplies. So any outward supply which is being taxed under the reverse charge, it makes it an exempt supply for the purpose of the reversal provisions of the ITC. So if any of the outward supply is taxable under reverse charge, then reversal provisions have to be invoked. That you have to keep in mind. Any exemption is there, then it should immediately struck to your mind that yes, reversal provisions have to be invoked in this particular question. So when you compute the ITC in the working notes, then take all the inward supplies, and on all the inward supplies, whether the tax is payable under RCM or tax is payable under forward charge, you can take the credit. Credit is available. So only thing is you have to give. Yes. Ma'am, whether separate notes notes required for the question or each point. Yeah, I'm coming to notes. Let me finish what I was telling. I will tell you the notes also. So you have to you have to apply the reversal provisions if required. And then while setting off, you have to set off only the eligible credit. Thereafter, any GST which is payable on inward supplies under reverse charge has to be paid separately in cash, because that we cannot use ITC for setting off the ITC payable, GST payable on inward supplies under reverse charge. This is something which you have to remember for the first question. Then as regards the explanatory notes, there are two ways of answering. Either you can compute you can take all the inward and outward supplies, whatever you are computing. There can be other questions also where you are asked to compute value of taxable supply, or simply you have to compute ITC. So whatever values you are taking in the table, you can simply write down the values and the particulars of those values. And reasoning you can provide below the table in the form of notes 1, 2, 3, 4, 5. Another way is that you can just write down the value, the particulars, and there itself you can mention the reasoning. But reasoning is very important. Even if some of the values or some of the item is not to be adjusted while arriving at the final answer, suppose subsidy is there,
You don't have to adjust it while arriving at the value of taxable supply. Then also reasoning for that particular subsidy, you have to mention that why you have not included or you have not excluded it from the value of supply, why you have not considered it. So sometimes we feel that whatever is important for arriving at the final answer, we have to write reasoning for that. No, everything, every item which is given in your question, you have to write reasoning for that. For that, you can see the suggested answers. In suggested answers, we do not provide very elaborate answers. We try to we try to provide the answers in the manner we expect or you are expected to answer in the examination. In fact, regarding examination, one important point is there that whatever questions are there, you have to answer them as per the position of law, which is applicable on 31st October 2024 for May 2025 examination. Now, what does it actually signify to you? If there is any amendment which is there, which took place in September or maybe in July. So there will be two positions of laws which will be applicable. Prior to July, there will be a different position of law. And post July, the maybe amendment took place on 11th of July, suppose. So after 11th July, on or after 11th July, there will be a different position of law which will be applicable. Cutoff date for May 25 is 31st October. Now you have to answer the question based on the latest position of law which is applicable on 31st October. This is in this point or at this point, we somehow differ from the direct tax paper, what I feel. There you have to remember the different cutoffs and you have to remember the different rates. So please note that in indirect tax paper, you have to answer on the basis of the latest position of law. And this is given as an instruction also on the first page of your examination. So please read all the instructions carefully. And this is what that instruction means, that if there is change, suppose that provision has changed multiple times during the year. Suppose one position was there in January, then March something else, then in June, again it changed. And some position was there in October. So October, once again, amendment was there. Since my cutoff date is 31st October, so we expect the students to write the answer based on 31st October 2024. Okay. Whether BOS is planning any bringing of a past year compilation of past year with amended for exam purpose like May at 25 or any other exam, अब जो पीछे के स्टडी प्रीवियस ईयर्स होते हैं ना मैम, उसके अपडेटेड नहीं आते हैं, मतलब वो सारे प्रीवियस ईयर्स के ही बेस्ड होते हैं, तो फिर उसको आपको खुद से इशू आता है. हाँ, टैक्सेशन पेपर्स में ये इशू आता है. उसके लिए देखो एमटीपी में तो अभी आपको यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट 6 पेपर्स एमटीपी के, उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा. हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली एग्जाम क्वेश्चंस की बात करोगे, काफी एग्जाम क्वेश्चंस हमने स्टडी में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं. कुछ एमटीपीज में भी आपको मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चंस. पर हाँ, अगर दिस सजेशन आई विल टेक नोट ऑफ, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वील ट्राई टू गिव यू दी अमेंडेड क्वेश्चंस ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन. बट आपको काफी सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एमटीपीज की फॉर्म में भी मिल जाते हैं. आरटीपी में आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, बट हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए मतलब यू विल गेट इनफ मटेरियल फॉर प्रैक्टिस. आप ये देखना, आपको कोई स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन में कभी डाउट होता है तो आप idt-final@icaai.in पे मेल डाल के भी पूछ सकते हो या BOS ऐप में क्वेरी डाल के भी पूछ सकते हो. ठीक है. ओके. अच्छा, दूसरा ये है कि आप स्टडी मटेरियल जरूर रेफर करना. आप स्टडी मटेरियल देखो, उसमें हर प्रोविजन जो है उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया हुआ है and then the analysis is given to you. So that helps you in inculcating a habit of reading the BEAR Act or rules. So refer the study material so that you do not leave anything or any provision which you are expected to cover. Whatever book you are referring, whatever notes you have prepared, that is fine, but they should be somehow, you should not leave the study material. Study material should definitely be referred. All examples, illustrations, test your knowledge questions, they are very, very important from the examination point of view. Study material में जिस तरह से provisions cover किए गए, that we have tried to make it as students friendly as possible. So if any of you have gone through the study material, you must be knowing that yes, we have tried to make it very simple in language, as well as we have tried to cover the statutory provisions also, so that you know this is the provision and this is the simplified version, or this is the analysis of this particular provision. This helps you in developing this habit of reading the BEAR Act and rules. So go through the study material, and for making best use of these classes, I once again suggest that please come prepared before the class for the session which is to be taken place.
participate as much as possible during the class, and please encourage your friends also to come to these classes so that you get a better and it becomes more interactive, and as well as you get, because from their doubts, sometimes your doubts get clarified. So मैम if the number क्वेरी of students will be more, you will be having a healthy interactive session. Yes, tell me. मैम जो अपनी क्वेरीज हैं वो BOS के ऐप में जो आस्क योर क्वेरी टैब है मैं उसके अंदर में करने हैं ना? हाँ, उसमें भी आप कर सकते हो, IDT-final पे आप मेल भी कर सकते हो। ओके और जो आपका क्लास का डाउट है वो आप सर से उसी वक्त पूछ सकते हो। आपको लगता है आपको नेक्स्ट से पूछना है, वैसे भी कर सकते हो, बट आप उसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि ये मेरी क्वेरी अभी मुझे कुछ और पूछना है, कोई पब्लिकेशन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन राइट अस टू एट IDT-final या फिर BOS ऐप में जो क्वेरी आस्क योर क्वेरी वाला सेक्शन है ओके उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो and try to make notes so that before examination you have a handy material for revision. This helps you in revising the syllabus, and you will be able to revise the entire syllabus if you have the complete revision material. In fact, सिर्फ concepts का ही एक revision material नहीं होना चाहिए, questions का भी होना चाहिए. You should mark some questions कि जो questions आप अभी preparation के time पर, जिन questions में आपको कुछ issues लगते हैं या आपको लगता है कुछ tricky points हैं, which you should refer before examination. अभी जब आपको questions करने हैं तो ideal way is that you should see the question and you should try to solve it on your own without seeing the answer. You should refer the answer only when you are sure that yes, you have completed that answer. Then you should refer the answer, that whether there is any you have done it correctly or not. That you should refer. But at that, you should not directly go to the answer, because that does not helps you in identifying your weak area, or in identifying where you have actually gone wrong. If you see the question, you see the answer, you will always find it very convenient and you will feel that everything is fine. You are able to understand the answer. But अगर आप उसे खुद करोगे solve, तब आपको समझ आएगा कि इसमें कुछ problems थी जो मैं नहीं कर पाया या ये गलतियां हुई हैं. Then you will be able to locate your areas where you have to improve upon. तो इसीलिए ये तरीका, उसमें आपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए, कुछ क्वेश्चंस अभी प्रिपरेशन टाइम में कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव सम ट्रिकी इश्यूज, या जो मुझे थोड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो मुझे एग्जाम में भी देखने हैं. सो डे बिफोर एग्जामिनेशन आई फील कि अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स यू शुड रेफर दी क्वेश्चंस ऑल्सो, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई थी या आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स जहाँ पे लगता है कि मैंने देखे थे, सो दैट इफ अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर. तो वो भी आप जरूर देखना. और बाकी हम सर आपसे जैसे एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन देम. आई फील कि ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन देम बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन एक्चुअली टेस्टिंग व्हाटएवर you have, how much you have understood during the session. So anybody has any other query or doubt to ask? I think we can conclude the session in that case, because we have already exceeded 15 minutes from the scheduled time. गुड डे. Okay. So, sir, should we conclude the session? Please, ma'am. Please. Okay. Okay. So, thank you so much, students. गुड डे मैम. Good. Good night. Thank you.